ठीक। And in this semester, in this particular lecture, uh, screen is visible. Students, screen is visible. Okay, I take it. Yes, fine. If you can recall, this was the last topic that we studied in the last lecture. It started with data warehouse system architecture. Here, we have talked about different components of data warehouse. Now, सबसे पहला component क्या हमने बात किया था? Data sources. Data sources अलग-अलग type के हो सकते हैं, private, public, archive data. Data could be in form of pie chart, text. These are the different types of data sources that are available. तो data sources में जो data है हमें उसे integrate करना है. वो data अलग-अलग form में है. ये data को हम कहाँ रखते हैं? Second component, which is data staging. हमने आपको कहा ये data staging में कहाँ जाके store होता है? या तो वो RDB फॉर्म में store होगा, या तो वो flat file फॉर्म में store होगा. Data को extract करना है, uniform तरीके से उसको convert करना है. And that we have discussed. ये मैंने अलग-अलग data के बारे में आपको बताया था. In data staging हमने कहा सबसे important है ETL process, extraction, extract the data from different resources, transform the data into the form which is needed, and load the data. Now, when it comes to loading, it was two types, if you can understand. And recall, it was initial loading. Initial loading is done only once when the archive data is first loaded in data warehouse. Now, initial loading will require to load large amount of data. इसलिए हमने आपसे कहा था कि it may take few days also. फिर क्या होगा? Incremental loading. Incremental loading मतलब जो आप daily basis पे transaction कर रहे हैं, वो सारे transaction historical data वो data warehouse में लोड हो जाएंगे. इसको हम कहते हैं incremental loading. हमने आपको कहा था कि ETL का हमने समझ लिया था, extract करो, data staging में temporary store करो, transfer करो data को common form में जो हमें चाहिए, process करो and data को load करो. दो type की loading हमने discuss की. The next component here was after the staging where the data is temporary stored. क्यों temporary stored? क्योंकि हमें ट्रांसफर करना है. अब मैं data को actual data storage में डालूंगा. EDW enterprise wise data warehouse. यहाँ पे हमारा जो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह से data जो ट्रांसफॉर्म किया गया, क्लीन किया गया, वो स्टोर किया जाएगा. Data multi-dimensional मॉडल में स्टोर किया जाएगा. We have discussed what is multi-dimensional model. मैंने आपसे ये कहा कि खाली data EDW स्टोर नहीं होगा, खाली data स्टोर नहीं होगा. Data के बारे में पूरी जानकारी, which is the metadata file, वो भी स्टोर होगा. And this was the discussion. EDW enterprise wise data warehouse contains all the data from entire organization as well as external sources. हमने कहा यहाँ पे metadata स्टोर होगा. We also discussed कि DBMS में metadata क्या होता है, traditionally. ठीक है ना. यहाँ पे हमने कहा कि जो EDW होगा वो भी multi-dimensional है, लेकिन बहुत ज्यादा होगा. जरूरी नहीं कि हर टाइप के अथॉरिटी को हर टाइप का डेटा एक्सेस करना है. जैसे कि मैंने आपसे बताया होगा, जो अकाउंट मैनेजर को उसमें अकाउंट का डेटा चाहिए, उसको जो भी स्टैटिस्टिक्स बनाना है वो अकाउंट डेटा ही बनाना है. इसके लिए अब बड़ा सा जो EDW है वो छोटे-छोटे डेटा क्या बोला हमने? डेटा मार्क्स बनेंगे. डेटा मार्क्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. हियर वी डिस्कस्ड डेटा मार्क इन ऑर्डर फॉर यूजर टू एक्सेस डेटा इजीली एंड एफिशिएंटली. लार्ज EDW दैट्स एंटरप्राइज डेटा वाइज हम उसको डोमेन स्पेसिफिक डेटा मार्क कन्वर्ट करते हैं. स्ट्रक्चर डेटा मार्क का EDW जैसे होगा. डेटा क्या प्रोवाइड करता है? हमारे डिपार्टमेंट का हमारे डेटा डिपार्टमेंट व्यू प्रोवाइड करता है. EDW क्या करता है? हमारे डेटा एंटरप्राइज व्यू प्रोवाइड करता है. फायदा क्या होता है डेटा को डिपार्टमेंट वाइज व्यू करके अगर किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरी को हम एक्सेस प्रोसेस कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट हो जाएगी. हम ये भी कहा कि डेटा मार्क बनाना जरूरी है, कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये नीड ऑफ होती है. इवेंचुअली जब मेरा EDW बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, हम चाहेंगे कि उसके हम छोटे-छोटे डिपार्टमेंट व्यू बनाएं जिसको हम डेटा मार्क कहते हैं. सो हियर वी स्टॉप आवर डिस्कशन इन द लास्ट लेक्चर एट डेटा मार्क. इज दैट ओके एवरीवन? कम ऑन. ओके नाउ मैं कैमरा स्विच ऑफ कर देता हूं. ठीक है. चलो नाउ अगर आपको याद होगा कि बाय द टाइम जब लेक्चर खत्म हुआ था तो मैंने एक और कंपोनेंट आपको ड्रॉ किया था एंड दिस कंपोनेंट वाज इंफॉर्मेशन एंड डिलीवरी. हमने कहा इंफॉर्मेशन डिलीवरी क्या है? ठीक है. अच्छा वन मोर इंटरेस्टिंग बिफोर वी गो टू इंफॉर्मेशन डिलीवरी. लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन हियर. मैंने ये इसको मैं एक सेकंड ना लेट मी कॉपी इट. ओके जस्ट हर्ष डेटा वेयरहाउस पे रुकना पड़ेगा. जैसे डेटा वेयरहाउस खत्म होता है माइनिंग शुरू हो जाएगा. बट यू नीड टू वेट टिल डेटा वेयरहाउस. थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल 25 से 30 आता है. ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक सेकंड. आई वाज नॉट एबल टू ओपन. ओके लेट मी शेयर इट. ओके नाउ सी दिस टेक्नोलॉजी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. हमने फोर्थ क्या देखा? हमारा डेटा पार्ट देखा. ठीक है. एंड देन सी हियर इट इज. यस हियर हमने देखा डेटा पार्ट देखा एंड देन वी सॉ इंफॉर्मेशन डिलीवरी. वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन डिलीवरी. मैंने कहा डेटा पार्ट में जो भी डेटा है दैट डेटा उस डेटा से मुझे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है और वो करने के लिए हमारे पास काफी टूल्स हैं जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन डिलीवरी. लेट मी कंटिन्यू आवर डिस्कशन. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी. नाउ सी ये सारे पॉइंट डेटा वेयरहाउस का है. डेटा वेयरहाउस इज ओनली 20% ऑफ योर सिलेबस बट वो आपके सिलेबस का स्टार्टिंग पार्ट है. सो वी हैव टू कंडक्ट दोस थिंग्स. नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी. दैट्स माय कंपोनेंट नंबर 4. नाउ इसका काम क्या होगा? जैसे हमने देखा वेरी 6 वेरी 6 इट सिक्स आफ्टर डेटा मार्क हम क्या बोलेंगे? इट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग. ये बाइबल में काफी इंपॉर्टेंट है. हर कंपोनेंट का काम क्या है? प्रोवाइडिंग डेटा फ्रॉम EDW और डेटा मार्क इन रिक्वायर्ड फॉर्म effectively to the user. एग्जांपल जैसे अगर मैं इन्फॉर्मेशन डिलीवरी का एग्जांपल लेंगे. मेरे पास जो भी डेटा है चाहे वो एंटरप्राइज वाइज डेटा हो चाहे वो डेटा मार्क का डेटा हो वो डेटा मेरे यूजर को इफेक्टिव फॉर्म में डिलीवर होना चाहिए. किस फॉर्म में डिलीवर कर सकता है? पाई चार्ट में डिलीवर कर सकता है या ग्राफ फॉर्म में डिलीवर कर सकता है. हम ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे डिलीवरी मेथड्स हैं. इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ डिलीवरी मेथड्स फॉर इन्फॉर्मेशन such as graph, reports, complex SQL queries, multi and cross-dimensional. We have discussed multi-dimensional. There could be cross-dimensional analysis also. We will let me show you 1.5 lecture only for data warehousing, and then we will start with data mining. But ये आपको 1.5 lecture में जो भी हम कवर करेंगे वो आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स का रहेगा. Various collab operations.
ना ये जो मैंने क्या कहा आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवरी एज द नेम सजेस्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवरी का काम है जो भी डेटा स्टोरेज है डेटा है और एक्सटर्नल मैनेजमेंट पे इन्फॉर्मेशन डिलीवरी बताओ कि लास्ट में हमारे कितना हुआ है तो वो डेटा हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो हम ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पाई चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन डिलीवरी हमको देगा वो डेटा हम अलग अलग एनालिसिस टूल को देंगे जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट सिस्टम ये सारे वो सिस्टम्स हैं जो ये डेटा पे डेटा माइनिंग करेंगे तो आप एक बात करेंगे यहाँ पे पहली बार मैंने डेटा माइनिंग वर्ड यूज किया है यानी डेटा माइनिंग यहाँ पे बैठेगा यहाँ पे डेटा माइनिंग कौन सा डेटा काम करेगा जो डेटा क्लीन होगा फॉर्मेट में होगा हम क्या बोलेंगे द इन्फॉर्मेशन is provided to various data analysis tool such as DSS, which is now the moment I'm saying decision support system, I'm talking about mining, decision support system, then executive information system, EIS, information. ये सब डेटा माइनिंग टूल्स होंगे जो यूजर को डिसीजन लेने में मदद करेंगे. Information retrieval and management IRM. These data mining tools can be used to perform एनालिसिस ऑन डेटा फ्रॉम टीडीडब्ल्यू और डेटा मार्ट सी नॉर्मली क्या होता है ये हमने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि जो मैनेजमेंट लोग बैठेंगे वो एक्चुअली वेरीफाई नहीं करेंगे उनको कुछ यूजर इंटरफेस टूल्स लगेगा जो चैनल होगा वो वेरीफाई नहीं करेगा कि हमारे कितने सेंस हो गए हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स होंगे जो विजुअल इंटरप्रिटेशन से हमको इंफॉर्मेशन देंगे सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन डिलीवरी का मतलब हमारे पास जो डेटा आ चुका है तीन फॉर्म में चाहे ईडब्ल्यू में हो या डेटा मार्ट में हो हमारे पास अलग अलग टूल्स होंगे टीआईएस आईआरएम ओएलपी ये टूल्स यूज करके मेरा जो हायर मैनेजमेंट है वो डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और एक अच्छे विजुअल्स में वो डेटा को प्रेजेंट करेगा सो दिस इज योर फोर्थ कंपोनेंट दिस इज योर फोर्थ कंपोनेंट नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज अगेन मेरा ये एग्जाम में श्योर क्वेश्चन है यू विल नॉट हैव पेपर दैट इज नॉट आस्किंग यू अबाउट कंपोनेंट द नेक्स्ट कंपोनेंट इज मेटाडेटा मैंने आपसे डिस्कस किया मेटाडेटा इज इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा ना मेटाडेटा ये जो यहाँ पे मेटाडेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपने जो आरडीबीएस में मेटाडेटा लिखा व्हिच इज डेटा डिक्शनरी फॉर्म वो काफी सिंपल था यहाँ पे डेटा होगा वो मेटाडेटा तीन टाइप का होगा एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेशनल मेटाडेटा एक ईटीएल मेटाडेटा तीसरा होगा एंड यूजर मेटाडेटा हम इसके बारे में यहाँ क्या कहेंगे मेटाडेटा इन डेटा वेयरहाउस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड in DBMS क्यों here the metadata contains data warehouse data it's not only about data it's about data warehouse data so metadata तीन टाइप का होगा पहला we call it as operational metadata ना तुमको क्या कहते हैं ऑपरेशनल मेटाडेटा क्या इन्फॉर्मेशन होगा जो ऑपरेशनल मेटाडेटा होगा यानी जो डेटा मेरे ट्रांजैक्शन जनरेट किया अगर वो डेटा ट्रांजैक्शन जनरेट किया मतलब हम ऑपरेशन सिस्टम के डेटा की बात करते हैं उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि भाई जो ओरिजिनल डेटा मेरे ऑपरेशन सिस्टम में जनरेट किया था उसका फॉर्मेट क्या होगा वो जो डेटा जनरेट हुआ है उसका सोर्स क्या होगा वो डेटा कहां से जनरेट हुआ कितना जनरेट हुआ किस फॉर्म में जनरेट हुआ उसको कहां रखा है कैसे रखा है ये सारा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसको हम ऑपरेशनल मेटाडेटा कहते हैं क्या कहते हैं इट इज डेटा अबाउट ऑपरेशनल सिस्टम it stores original format of data क्योंकि operational metadata है तो मेरे डेटा का original format यहाँ पे store होगा also stores information like data from where how much in what form where stored how stored so the first type of metadata will answer all these questions related to operational metadata now operational यानी data source जो next metadata होगा इसको कहते हैं ETL metadata when we say ETL extraction transformation and loading so it answers question like which extraction method it answers question like which extraction cycle अगर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसका साइकिल क्या होगा क्या उसका डेली एक्सट्रैक्शन हो रहा है वीकली एक्सट्रैक्शन हो रहा है या डेटा का मंथली एक्सट्रैक्शन हो रहा है एंड सो ऑन अच्छा अब एक्सट्रैक्शन ही नहीं आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्वेश्चन अराइजेस व्हिच ट्रांसफॉर्मेशन टू अप्लाई इसका एग्जांपल क्या होगा आप चाहते हो जैसे डेट DDMM YY फॉर्म में हो या MMDD YY फॉर्म में हो इस फॉर्म में आप डेट को कन्वर्ट करना चाहते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आंसर देता है कि भाई व्हिच लोडिंग मेथड आर यू यूजिंग जब हम लोडिंग मेथड के बारे में पूछते हैं तो क्या आप ASCII फॉर्म में लोड कर रहे हैं या आप यूनिकोड फॉर्म में ही डेटा को लोड कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमने ये देखा कि सेकंड फेज में हमारा ETL होता है ना ETL होता है तो ठीक है लेकिन जो हमारे एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग ये जो तरीके हैं इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाता है एंड ETL मेथड का भी आंसर दिस क्वेश्चंस ना अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है मेरे ETL मेथड की मेरे ETL मेथड की सबसे अच्छी बात क्या है एक बार हमने ये डेटा दे दिया मेथड में हमको ये बार-बार स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है ये एक अच्छी बात है वंस ETL metadata is specified there is no need to specify it again and again सर पहले आपने मेटाडेटा का रिलेटेड टू ऑपरेशनल उसमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा डेटा कहां से आया कितना किस फॉर्म में कहां स्टोर किया कैसे स्टोर किया ETL में आपने कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया कौन सा एक्सट्रैक्शन साइकिल यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन किस कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है और आपका लोडिंग मेथड आपका डेटा किस फॉर्म में लोड हो रहा है नाउ द थर्ड इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंड यूजर मेटाडेटा नाउ एंड यूजर मेटाडेटा सी DBMS में जो एंड यूजर है उसको मेटाडेटा देखने को नहीं मिलता है जैसे अगर मैंने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया इन्फोसिस में बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया जो एंड यूजर है जो बैंक में काम कर रहा है उसको मेटाडेटा देखने को नहीं मिलेगा वो मेटाडेटा देखने को मिलता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो हम यहां कहेंगे इन DBMS एंड यूजर डू नॉट हैव एक्सेस टू मेटाडेटा लेकिन डेटा वेयरहाउस में ऐसा नहीं है इन डेटा वेयरहाउस द एंड यूजर is made available some metadata हम एंड यूजर को कुछ मेटाडेटा अवेलेबल कराते हैं क्यों ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हम डेटा वेयरहाउस में एंड यूजर को हम मेटाडेटा अवेलेबल कराते हैं उसका रीजन ये है कि हमारा जो EDW जनरेट होता है वो EDW जनरेट होता है बहुत होता है और बहुत बार ऐसा होता है जैसे मैंने कहा एंटरप्राइज लेवल डेटा जनरेट हो रहा है हिस्टोरिकल डेटा भी है पुराना डेटा भी है एक्सटर्नल डेटा भी है आर्काइव डेटा भी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा एंड यूजर डेटा को समझ नहीं पाता है हेंस वी वांट माय एंड यूजर टू अंडरस्टैंड द डेटा सो इसलिए डेटा वेयरहाउस में द एंड यूजर इज मेड अवेलेबल सम मेटाडेटा व्हाई एज सम मेटाडेटा एज EDW is very complex and with some metadata info end user will be able to understand the data अच्छा जब एंड यूजर मेटाडेटा की बात आती है एंड यूजर मेटाडेटा दो टाइप का होगा एक देखिए मैंने कहा ना भाई एंड यूजर दो होते हैं एक जो मेरा टेक्निकल यूजर है एक जो मेरा नॉन टेक्निकल यूजर तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड यूजर मेटाडेटा वी कैन हैव
technical metadata, and non-technical means business metadata. It is used by data warehouse. Technical use करेगा जो administrator है, and other technical use of the system. Business metadata कौन use करेगा? Non-technical users. Used to make business decisions. Now, चलो, now you answer me question. चलो, operational metadata कहाँ store होती है? एक बार समझना. अगर डायग्राम लिखेंगे, इस डायग्राम में मैंने metadata रखा है, data storage में मैंने metadata रखा है. Yes everyone, come on, we need to talk about it. है. Just try to understand this. मेरा metadata रखा हुआ है, data storage में रखा हुआ है. मैंने आपसे कहा कि हमारे पास तीन metadata होंगे, operational, ETL and end user metadata. So if these are metadata, they must be stored somewhere. My question is, answer me. Operational metadata कहाँ store किया गया होगा? Come on. Operational metadata कहाँ store किया गया होगा? In which component the operational metadata is stored? Come on. You need to answer me or you write the answer. Source. अब operational metadata कहाँ store किया गया होगा? Operational system में. Data source में. Operational metadata यहाँ से data source में. So operational metadata कहाँ store किया गया होगा? It is stored at data source. चलो, ETL metadata कहाँ store किया गया होगा? आंसर आपको पता चल गया होगा. Come on, ETL metadata कहाँ store किया गया होगा? Come on यार. ETL metadata process हाँ? Data staging में. Perfect. क्या 2 सेकंड का काम है बोलो यार. It is stored at data staging. और end user metadata कहाँ store किया गया होगा? End user. Information delivery system. Perfect. Information delivery system है ना. यहाँ पे मेरा end user ये सारे tools को access करके information retrieve करता है. Very good, nice. ये कहाँ store होगा? It is stored at information delivery company. Now, इसे हम क्या लिखते हैं? ये जवाब देखते हो. Come on. तो सर आपके कहने का मतलब एक metadata इधर है, फिर एक metadata इधर होगा, एक metadata इधर भी होगा. इधर कौन सा metadata होगा? मैंने कहा ETL metadata. बराबर. यहाँ क्या होगा? Operational metadata. यहाँ क्या होगा? ये will have end user metadata. और ये metadata किसका है? EDW का metadata है. ये जो metadata मैंने data storage में आपको बताया था, ये क्या है? EDW का metadata है. तो looking this, what we can understand कि we have two type of metadata. One that is centralized, which is stored in data storage and contains EDW metadata. Other are distributed metadata. So distributed metadata are those metadata which are distributed across different components like data source, data staging and information delivery. Clear? तो ये जो operational metadata है, ये जो ETL metadata है, ये जो end user metadata है, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम distributed metadata कहेंगे. और वो जो metadata जिसमें EDW का metadata है, which is at the data storage, इसको हम central metadata कहेंगे. So हम आगे इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे. Also, when we have metadata, it is of two types. One is centrally metadata, which is stored in data storage, and other is distributed metadata, which is stored across various buckets. इसमें हमारे ये तीन होंगे: operational, ETL and end user. So we have talked in detail about the fifth component, which is metadata. जैसे हमने कहा operational, ETL, end user है. और metadata के बारे में हमने देखा कि वो क्या टाइप का information store करेगा. हमने ये भी देखा कि this particular metadata will be stored at which particular place. Then we saw कि the end user metadata, we can have two variety, that end user may be a technical end user or non-technical end user. And the last we can say about metadata is taking into this larger picture, we can say that the metadata is of two types. One, which is central metadata that is stored in data storage and it contains EDW metadata. And this metadata contains information about operational metadata, ETL metadata, and end user metadata. So this is my fifth component. And now we are going to see the last component of the architecture, which is known as the last component of the architecture, and that will end this question. The question is component of data warehouse. And the last component is sixth component क्या बोलेंगे? Control and management. ये control और management मेरे data source से भी बात करेगा, data to and fro. ये data staging से भी बात करेगा, storage से भी बात करेगा, data mart से भी बात करेगा, और information delivery system से भी बात करेगा. So this sixth component is control and management component, and the last component in the architecture of data warehousing. So now let us talk about the sixth component and the last part of this answer. The sixth component is control and management component. Now, why do we need this? ये हमारे पास जो हमारे पास हमारे कंपोनेंट क्या रहेगा? डेटा सोर्स, डेटा स्टेजिंग 2 हो गया, डेटा स्टोरेज 3 हो गया, डेटा वेयरहाउस 4 हो गया, डेटा मार्ट 5 हो गया. ये पार्ट इंफॉर्मेशन डिलीवरी, ये सबको हमको कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट है उसका नाम है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट. लेट्स सी इसका काम क्या है. इट इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल अदर कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ डेटा वेयरहाउस. ये और क्या कंट्रोल करता है? इट आल्सो कंट्रोल्स इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस. अच्छा, now tell me, कंट्रोल करने के लिए अगर मेरे पास कंपोनेंट है, this central component, control and management, just tell me, कंट्रोल करने के लिए हमको कौन सा इंफॉर्मेशन लगेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को क्या लगेगा बेटा? metadata. Perfect, very good. तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को see the information required by control component is metadata. क्यों ऐसा बेटा? क्योंकि metadata में हमने हर एक्टिविटी का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है. तो क्या बोलेंगे? we can say control component checks metadata to allow any activity. कोई भी एक्टिविटी जैसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहले चेक करेगा कि मेटाडेटा में क्या टाइप का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है. तो जब भी मेरा कंट्रोल और मैनेजमेंट यूनिट कोई भी एक्टिविटी वाला होगा, उससे पहले क्या चेक करेगा? मेटाडेटा चेक करेगा. सो दिस इज सिंपल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट. सो आपको एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया है. व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस सिस्टम आर्किटेक्चर? इट ऑल स्टार्टेड विद डेटा सोर्सेस, डेटा स्टेजिंग, स्टोरेज, डेटा मार्ट्स, इंफॉर्मेशन डिलीवरी एंड कंट्रोल मैनेजमेंट. We have given detailed explanation and sufficient for what is needed in exam for each of these components. Now, please try to understand. ये जो मैंने अभी सिस्टम बनाया है, आर्किटेक्चर बनाया है. Just tell me, this architecture is top down or bottom up? Come on, help me. ये जो मैंने अभी आपके सामने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है, this is top down or bottom up? I need student to talk. Top down. नेक्स्ट लेक्चर मिडवे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सारे सब्जेक्ट हमारे टाइमिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी डेटा वाउसिंग एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करने बाकी है. खासकर स्नोफ्लेक स्कीमा है, स्टार स्कीमा है, ये सब जब हम खत्म करेंगे then we start with mining. तो तब तक आपसे बात करोगे, mining चालू होती है और फिर इंडस्ट्री है, तो अपनी बात करोगे तो मेरा मन रहेगा. Now tell me, this method क्या बोला आपने? Top down or bottom up? Top down. क्यों बोलते हो top down? Why are you calling this as a top down approach? वैसे डेटा सोर्स से आप डेटा वेयरहाउस क्या बोला? तो कंपोनेंट से हम लोग डेटा स्टोरेज डेटा वेयरहाउस की तरफ और कुछ कहना चाहते हैं इसमें? ऐसा भी है. बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना है. मैं बड़े से EDW को छोटे-छोटे डेटा मार्ट में डिवाइड कर रहा हूं.
Can you understand this? We have big first हम अपने डेटा सोर्सेस से डेटा स्टेजिंग में जाते हैं. डेटा स्टेजिंग के बाद हमने जो डेटा को लोड किया वो इनिशियल और इंक्रीमेंटल दोनों ही लोडिंग के बाद जो मेरा डेटा बनता है बड़ा सा वो मेरा EDW है. मैंने क्या बताया आपको EDW रिप्रेजेंट्स द एंटरप्राइज व्यू ऑफ द डेटा. कोई कंपनी का आपको क्या देगा वो डेटा कल आपको व्यू देगा. लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि आपको डिपार्टमेंटल व्यू चाहिए डेटा का. तो जब हमारे पास बड़ा सा डेटा है और जो कि EDW है उसको हम छोटे-छोटे डेटा मार्ट में डिवाइड करते हैं टॉप डाउन अप्रोच. मैं आपको कुछ नोट में मेंशन कर देता हूं. नोट इंपॉर्टेंट. देखिएगा. The above flow of components represents top down approach. Okay, but top down approach के challenges क्या है सर? Challenges in top down approach. Top down approach के challenges क्या है? चलो पहला challenge EDW is very large. जो आपका enterprise data warehouse बनता है वो काफी बड़ा है. नहीं bottom up नहीं है मेरा. अच्छा इसके लिए मुझे क्या लगेगा? Need data mart. अच्छा ना सी ये एंटरप्राइज को टॉप डाउन करें. एंटरप्राइज क्या करता है? एंटरप्राइज पहले अपने लेवल पे सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करेगा. अब एंटरप्राइज लेवल पे मेरे पास बड़ा सा डेटा है उसमें से मैं हर डिपार्टमेंट को अपना डेटा देता हूं. आपने डीबीएमएस में व्यू पढ़ा होगा. व्यू इट्स अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड ऑन फ्लाई. तो इसका फिलॉसफी ऐसा है पहले मैं बड़ा सा EDW बना लेता हूं एंटरप्राइज लेवल पे. फिर मेरे डिपार्टमेंट लेवल पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी डिपार्टमेंट लेवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे-छोटे डेटा मास बनाऊंगा. ये काफी रिस्की है. इट इज एक्सट्रीमली रिस्की. इसमें चांसेस ऑफ फेलियर काफी हाई है. क्यों ऐसा? हमने कहा जैसे काफी कॉम्प्लेक्स है एज दिस वेरी कॉम्प्लेक्स. सो इवन टीम ऑफ एक्सपर्ट will face difficulty in actually implementing the product successfully implementing. So इसका एडवांटेज क्या है? आपने challenges को बताया. एडवांटेज ऑफ टॉप डाउन अप्रोच. तो इसका एडवांटेज कैसे? इसका जो फ्लो है बहुत सिंपल है. अच्छा डेटा बार-बार इंटीग्रेट करने का चैलेंज ध्यान से देखना प्लीज. ये जो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. यहां क्या करेगा कि हम एक बड़ा सा EDW बनाते हैं एंड वी आर वेयर EDW में जो डेटा है वो कॉमन फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि डेटा स्टेजिंग के दौरान हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था. क्योंकि डेटा स्टेजिंग के दौरान हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था और उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से डेटा यूनिफॉर्म हो गया है. अब EDW में जो डेटा है वो यूनिफॉर्म है. तो जो डेटा जैसे EDW में अगर मेरा जो भी डेट स्टोर होगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, EDW में जो भी डेट स्टोर होगा वो कॉमन फॉर्म होगा DDMMY. सपोज वो कॉमन फॉर्म है DDMMY. तो EDW will have data date stored in form of DDMMY. सो जब मैं इस बड़े से EDW को छोटे-छोटे डेटा मार्ट में कन्वर्ट करता हूं, सो टेल मी डेटा मार्ट में जो डेट है वो किस फॉर्म में होगा बेटा? सेम DDMMY. हां या ना? हां सर उसी फॉर्म में. तो हम क्या बोलेंगे ये जो फ्लो है ना ये सिंपल है और हमें बार-बार डेटा इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां हम बेसिकली डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डेटा मार्ट में. सो हम बोलेंगे if implemented successfully the flow is simple. और हमने क्या बोला? हमको डेटा को बार-बार इंटीग्रेट नहीं करना है. EDW के बाद डेटा वेयरहाउस में कन्वर्ट करने के लिए डेटा को इंटीग्रेट नहीं करना है. There is no challenge of again integrating the data. ठीक है. अच्छा ना अगर मैं आपसे कहता हूं कि EDW से डेटा मार्ट यानी एंटरप्राइज लेवल से डिपार्टमेंट लेवल में जब हम डेटा को ब्रेक करते हैं इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं. सो बताइए बॉटम अप अप्रोच क्या होगा? डेटा मार्ट से EDW बनाना. डेटा मार्ट से EDW बनाना. क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि हर डिपार्टमेंट अपना डेटा रेगुलरली जनरेट करता रहेगा और उसको इंटीग्रेट करते रहेंगे? यहां पे क्या होगा? सारा डेटा इंटीग्रेटेड है EDW में. बराबर? हां. हां. ये मेरा टॉप डाउन अप्रोच. ना बॉटम अप अप्रोच आपको देख के समझ में आ जाएगा कि बॉटम अप अप्रोच का मतलब डिपार्टमेंट वाइज डेटा बनाइए. डिपार्टमेंट वाइज डेटा बनाइए और उसको इंटीग्रेट कीजिए. आपको लगता है अगर मैं उल्टा बना रहा हूं डेटा मार्ट से अगर मैं EDW बना रहा हूं तो डेटा मार्ट में डेटा रेगुलरली अपडेट होता रहेगा क्योंकि डिपार्टमेंट लेवल पे ट्रांजैक्शन डेटा है. तो मुझे बार-बार लगातार डेटा को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. उसको फॉर्मेट करने पड़ेंगे क्योंकि डेटा फ्रॉम ये बॉटम अप है. डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा मार्ट आर सपोज्ड टू गेट इंटीग्रेटेड इवेंचुअली ओवर द टाइम अगेन एंड अगेन. सो बड़े से जो मेरा डेटा EDW है उससे डेटा मार्ट में बनाना आसान काम है. अगर डेटा मार्ट से डेटा यानी डिपार्टमेंट लेवल से डेटा इंटीग्रेट करके EDW बनाएंगे ये काफी हैप्पी होगा क्योंकि डिपार्टमेंट लेवल पे डेटा रेगुलरली जनरेट हो रहा है और वो डेटा मुझे बार-बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. हियर वी विल टॉक अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट बॉटम अप डिजाइन. In bottom up design every department will have small scale डेटा वेयरहाउस. हर डिपार्टमेंट का छोटा-छोटा डेटा वेयरहाउस रहेगा जिसको हम क्या बुला सकते हैं बेटा? डेटा मार्ट भी बुला सकते हैं. एंड देन these can be integrated as EDW. हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं. अच्छा बेटा इसमें एक बात बताओ कि बॉटम अप डिजाइन में चांसेस ऑफ फेलियर कम क्यों होगा? मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया किसी मुझसे पूछा नहीं सर ये एक्सट्रीमली रिस्की क्यों है और चांसेस ऑफ फेलियर हाई क्यों है? बेटा चांसेस ऑफ फेलियर हाई इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करके एक जगह रख रहे हैं तो रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर फेलियर होगा तो सारा डेटा मिल जाएगा. लेकिन अगर मैं बॉटम अप अप्रोच यूज करता हूं बिकॉज़ हम जो डेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट लेवल पे डेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो भी रिस्क होगा वो डिपार्टमेंट लेवल पे होगा ना कि EDW पे होगा. तो हम इसको क्या कहेंगे? Here the risk of failure is small as the data warehouse created at small scale and so chance of failure is low. हाँ बेटा इसमें हम डेटा कलेक्ट करके कितना की जरूरत नहीं वाले हैं. एक साथ इकट्ठा करके डेटा कलेक्ट करके कितना की जरूरत नहीं वाले हैं. EDW में फ्लो होगा. सी अभी ये फ्लो हो रहा है EDW टू डेटा मार्ट में जा रहा है यानी प्राइमरी डेटा कहां है EDW. अच्छा अगर मेरे पास डेटा इकट्ठा हो गया है जस्ट बिकॉज़ बहुत सारे डेटा मैंने पहले इकट्ठा कर लिया है एंड नाउ आई एम डिवाइडिंग डेटा मार्ट. इफ दिस फेल्स डेटा ऑल द डेटा मार्ट्स आल्सो फेल. हां. लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं भाई आपको डेटा मार्ट बना रहा है इंडिविजुअल ऑपरेशन सिस्टम और वो आपको इंटीग्रेट करना है EDW में. तो अगर इंडिविजुअल डेटा मार्ट फेल होता है तो पूरा EDW फेल होगा. बाकी डेटा क्या है? हां सर लेकिन फिर भी उसका फेलियर डेटा तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता है. पूरा EDW की मतलब से बढ़ना पड़ेगा. लेकिन स्टोरेज का रिस्क अलग है. हम बात कर रहे हैं रिस्क व्हेन वी आर ट्रैवर्सिंग थ्रू द फ्लो. जब EDW कन्वर्ट होगा डेटा मार्ट में तब का रिस्क और जब डेटा मार्ट से डेटा कन्वर्ट होगा EDW में तब का रिस्क बात कर रहा हूं. अच्छा ये जो पॉइंट बोल रहा बेटा अभी यही पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं. सबसे बड़ा चैलेंज है बॉटम अप अप्रोच का क्योंकि देखो मेरे टॉप में क्या बोल रहा है एडवांटेज में कि एडवांटेज में देयर इज नो चैलेंज ऑफ अगेन इंटीग्रेटिंग द डेटा. लेकिन बॉटम में सबसे बड़ा चैलेंज है यू हैव टू इंटीग्रेट डेटा अगेन एंड अगेन. वो इज ऑब्वियसली है तो इंटीग्रेट डेटा मार्ट. अच्छा ये जो डेटा मार्ट है ये अलग फॉर्म में बना होगा तो ये EDW इज अ चैलेंज. पहला दूसरा पॉइंट है ये जो डेटा जनरेट हुआ डेटा मार्ट से सिंस हियर द डेटा मार्ट आर ट्रांजैक्शनल डेटा तो ये रेगुलरली जनरेट होता है हेंस आर generated in ongoing form. So again and again integration is a challenge.
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अलग अलग डेटा मार्क्स डेटा को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन बेटा इसका एडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ फेलियर इज लेस। पहला, इट इज कंपैरेटिवली बिकॉज़ इट इज ऑलवेज इजी कि मेरा डेटा डिपार्टमेंट लेवल पे है ना, इट इज ऑलवेज इजी कि मेरा डेटा डिपार्टमेंट लेवल पे जनरेट हो, हम क्या कहेंगे कंपैरेटिवली इजी टू इंप्लीमेंट। एंड सेकंड, जैसे मैंने आपसे कहा था, द चांस ऑफ फेलियर इज लेस। So the component structure that we studied, where we concluded the EDW gets bifurcated into data marts is top-down approach. The chances of failure is high because EDW is very complex. Why EDW is complex? Because it has already stored data which has been transformed, and the data sources are different. Also, the formats are different. Now, there is a challenge. Why? Because since EDW is very large and complex structure, when you're breaking it into data mart, there is always a risk of failure. However, when we are going in opposite direction, recreating EDW from data mart. Now, since we now need to handle only individual data marts, which is the departmental data, so chances of failure is less. Also, there is a challenge. When we are integrating data again and again, why again and again? क्योंकि जो department level data generate हो रहा है data mart में, ये ongoing data है, जैसे transaction हो रहा है, ऐसे वो data generate होता जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब हम डेटा मार्क्स से डेटा इंटीग्रेट करेंगे EDW। So this is where we talked about bottom up approach and top down approach. We saw the challenges of them and we saw the advantage. Now there's very important question with respect to again data warehouse, and that question is सर हाँ बोलो क्या इसलिए भी कह सकते हो पीछे में लगा में नहीं सर, नीचे एडवांटेज ऑफ वो। हाँ सर व्हाटएवर अप्रोच में अगर एक साथ एक डेटा मार्ट रहता है तो विदाउट करने का मेथड कैसा हो जाता है? बेटा ट्रांजैक्शन डेटा है बेटा मैंने क्या कहा, अगर डेटा मार्ट उसके डेटाबेस होगा ही, अब ऐसे नहीं समझ रहे हो, डेटा मार्ट डेटाबेस से बड़ा ही होगा, तो अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लेवल के बारे में सोचोगे तो हम भी बिफोर द डेटा एक्सेस टू डेटा मार्ट ऑब्वियसली इन द बैकग्राउंड डेटाबेस, तो वो अवेलेबिलिटी हमारा फीचर डेटाबेस में देखा होगा, वो हमेशा होगा ही होगा। क्योंकि मेरा जो ट्रांजैक्शन होता है वो डेटाबेस में जाएगा हमेशा, तो वो क्या करते हैं डेटाबेस के डेटा को हम डेटा मार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बैकग्राउंड में ऑलवेज डेटाबेस अवेलेबल टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा फॉरएवर। तो क्या कंसिस्टेंट होएगा? क्या बोला तो कंसिस्टेंट होएगा हमारी बात नहीं, वो कंसिस्टेंसी एनफोर्स किया होगा, डेटाबेस में कंसिस्टेंसी एनफोर्स किया जाता है ना। नहीं सर ऐसा नहीं, डेटा मार्ट में सपोज डेटा अगर लाखों लोड होता है, लाखों से प्रोसेसर के डेटा में डालते हैं तो कोई फेल जाता है तो डेटा मार्ट में जाएगा नहीं। बेटा ये मैंने कहा ना, तो ठीक जब तुम डेटा वेयरहाउस पढ़ रहे हो तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने आपसे कहा डीबीएमएस है तो डीबीएमएस में मेरे जो प्रोटोकॉल्स होंगे जो कंसिस्टेंसी इंश्योर करेंगे वो इंप्लीमेंट होगा बाय डिफॉल्ट। आप बोलो डेटा फेल हो गया तो डेटा डेटाबेस से करेगा ना, फिर से जस्ट इंश्योर कि डेटा कंसिस्टेंट हो। ओके सर See, this, I agree, if philosophy topic है, but then important है, बहुत अभी सब चीज़ों का एग्जाम आएंगे 100%. Next question that we need to discuss is what is multi-dimensional data model? Very important question. और यहाँ पे आगे जाके हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हम slicing पढ़ेंगे, हम dicing पढ़ेंगे, हम rotation पढ़ेंगे, pivot पढ़ेंगे, eventually हम information package पढ़ेंगे, then हम dimensional analysis पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे star schema, snowflake schema, ये सब fact table, factless table, these are all part of data warehouse. और काफी बढ़िया है data warehouse में, जो कि तकरीबन 25% of your syllabus है, ठीक है? Now before we okay, let me write question form. Let me discuss something interesting. Okay, हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा operational system है. Operational system user के लिए, ठीक है? No. So when we are talking about operational system, तो user के लिए रूल्स डिफाइंड है, यूसेज आल्सो डिफाइंड एंड टास्क इज रिपीटेटिव। क्या आप करते हो? मेरे को एक बंदा जो काम कर रहा है ऑपरेशन सिस्टम काम कर रहा है, उसके रूल्स डिफाइंड उसको क्या करना है, वो सिस्टम को कैसे यूज करेगा ये भी डिफाइंड है और उसका टास्क भी रिपीटेटिव। और मैंने आपसे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कहा था, इंफॉर्मेशन टास्क रिपीटेटिव क्या करेगा? नहीं नीड बेस है या एडॉक है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि डेटा वेयर में डेटा वेयरहाउस में क्या मैं कह सकता हूं कि यूजर को पहले से पता नहीं है कि उसको सिस्टम से क्या चाहिए, यूजर को पता ही नहीं है कि उसको सिस्टम से क्या चाहिए। सो सबसे पहले सिस्टम डिजाइन का क्या पार्ट हो सकता है, रिक्वायरमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या हो सकता है, रिक्वायरमेंट करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, यूजर स्पेसिफिक कर सकते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, उसके फंक्शंस क्या होंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे, कौन से रिपोर्ट लगेंगे। लेकिन मैं जब ओवरऑल यूजर डेटा वेयरहाउस की बात करता हूं, वो नीड बेस है, एडॉक है। यूजर को पहले से ही पता नहीं है कि उसको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा। अगर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट यूजर को पहले से पता नहीं तो रिक्वायरमेंट क्या है, टाइमिंग टास्क है कि नहीं, हां बराबर है। जैसे सेल्स मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर है जो कि यूजर है, किसका यूजर है, डेटा वेयरहाउस का, उसको एनालिसिस परफॉर्म करना है। या मैं स्टार्टिंग में कहा था 3 डायमेंशनल डेटा, ठीक है ना। इसको लेट मी स्पेसिफाई इन डेटा वेयरहाउस यूजर इज नॉट अवेयर in advance about the need of the system as it is ad hoc in nature. तो मैं किसी भी सिस्टम डिजाइन का इन एनी सिस्टम डिजाइन तुमने सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, उसमें पहला फेज क्या होता है, सॉफ्टवेयर में एसडीएलसी पढ़ा होगा, यस नो, उसमें पहला फेज क्या रिक्वायरमेंट इन एनी सिस्टम डिजाइन, द फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हाउएवर इन डेटा वेयरहाउस द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मैं फ्यूचर में क्या क्वेरी भेजने वाला हूं मुझे मालूम नहीं है, मैं फ्यूचर में क्या क्वेरी सॉफ्टवेयर में सॉरी मैं क्या क्वेरी एग्जैक्टली भेजने वाला हूं मुझे पता नहीं है। मेरे को क्या डेटा लगेगा, मेरे को क्या क्वेरी जाएगी, सो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट is not clear initially, so designing data warehouse system is a challenge. Example, a sales manager wants to get sales data as number of units sold and profit earned for a particular mobile handset in a particular region in particular month. It's nice. Okay. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पर्टिकुलर हैंडसेट, पर्टिकुलर रीजन एंड पर्टिकुलर मंथ। ये मेरा क्वेश्चन है, वो 3 डायमेंशन दिखा रहा है। मेरा क्वेश्चन है, वो 3 डायमेंशन दिखा रहा है, प्रोडक्ट टाइप, रीजन एंड मंथ। यार मैंने एक बात कहा था, अगर मैं इसका क्यूब फॉर्म में बनाने जाऊं, ओके, मैंने कहा सपोज अलग डायमेंशन लेगा, इसकी प्रोडक्ट है, ये मेरा रीजन और ये मंथ डायमेंशन, ठीक है। तो देखो बड़ी मुसीबत है, सीधा लाइन बनता ही समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब ये देखो
मतलब ये रीजन है। अब समझिए क्वेश्चन, ये मेरा प्रोडक्ट P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ये रीजन R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5, ये D1 मंथ 1 है, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4। तो अगर मैं कोई भी सेल करता हूं, ये सभी कोऑर्डिनेट्स के होंगे, रीजन प्रोडक्ट, ये जो पहला है बेटा, ये जो पहला है, ये प्रोडक्ट P1 का होगा। तो अगर मैं ये जो सामने वाला डेटा दिखाऊं, ये प्रोडक्ट P1 का रीजन R2 का मंथ M2 का सेल्स डेटा दिया है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। इसको हम कहते हैं, आप यहाँ से वैल्यू होगा, वैल्यू समझो 200 पीस बेचा और 20 लाख का फायदा होगा, 20 लाख का फायदा होगा। सो मैंने क्या इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न, ये दो डेटा मुझे चाहिए। सपोज ये डेटा ऐसा है, 200 यूनिट्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न इज 20,000 रुपीस। नाउ दिस एनालिसिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ पे मुझे पहले से पता नहीं चल सकता यूजर मंथ 2 के लिए बोलेगा। अच्छा, एक कोई यहाँ से यूजर क्वेश्चन बोला है, वो है प्रोडक्ट टाइप, रीजन एंड मंथ। यूजर ऐसे भी बोल सकता है कि वीकेंड में कितना सेल हो गया, तो जैसे यूजर वीकेंड कहता है कि भाई पिछले 6 महीने में वीकेंड पे कितना सेल है, वीकेंड के पैरामीटर अलग हो जाएंगे। अब ये एक चैलेंज है, ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, कि मैंने सिस्टम कैसे डिजाइन करूं, वीकेंड को एक अलग पैरामीटर हो गया है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड दिस चैलेंज इज बाय सी जैसे एक एग्जांपल अगर मेरे पास DBMS है, डेटाबेस है। सुनो, अगर मेरे पास डेटाबेस है, ये डेटाबेस में मेरे पास सेल्स डेटा कि ये तारीख को इतना सेल्स हो गया, तो वो डेटा से मैं सिर्फ वही वेरीफाई कर सकता हूं जो ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में है। जैसे कि इस महीने कितना मोबाइल बिका, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले दिवाली को कितना मोबाइल बिकेगा। मैं ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगर एप्पल आईफोन 5 इतना बिका तो 6 कितना बिकेगा, क्योंकि ये सब प्रेडिक्शंस मैं DBMS में नहीं कर सकता, क्योंकि DBMS में डायमेंशन फिक्स है। लेकिन डेटा वेयरहाउस में ये मुझे फ्रीडम देता है कि मैं ये सारे प्रेडिक्शंस का ट्राई कर सकूं। एंड सो इसमें मैंने कहा कि सबसे बड़ा इसमें चैलेंज क्या है कि यूजर को पता ही नहीं है कि क्या मेरा एंड यूजर क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज़ इफ आई वांट टू डिजाइन अ डेटा वेयरहाउस सिस्टम, द फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट गाथरिंग। फॉर दैट मैटर ऑफ द फैक्ट किसी सिस्टम को मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट गाथरिंग करना पड़ेगा। अरे डेटा वेयरहाउस रिक्वायरमेंट करना कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। वी कॉल इट एज डायमेंशनल एनालिसिस। सो द एनालिसिस ऑफ डेटा with respect to dimensions provided by user, user कितने dimension दे सकता है, is called dimensional analysis. तो यहाँ पे मेरा every cell here, every cell of the cube क्या represent करता है? Represents units sold, profit earned for particular product for particular region and particular month. अच्छा, एक बात है, ये जो डेटा है जो मेरे सेल्स मैनेजर को दिया, मेरे सेल्स मैनेजर को क्या दिया, मैं टर्मिनोलॉजी बताना चाहूं, मेरे सेल्स मैनेजर को दिया कि आपने कितना यूनिट सोल्ड किया और कितना प्रॉफिट अर्न किया। ये जो डेटा, इस डेटा को क्या कहते हैं मालूम है? फैक्ट। क्या कहते हैं इस डेटा को? फैक्ट। आगे जाके फैक्ट को बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्ट। व्हाट इज फैक्ट? द डेटा दैट यूजर want to analyze with respect to multiple dimensions are called facts. अच्छा, इसको और भी नाम दिए गए हैं, इसको हम और क्या बुला सकते हैं? हम इसे फैक्ट बुलाते हैं, हम इसे बिजनेस मेट्रिक्स भी बुला सकते हैं, हम इसे बिजनेस मेजर्स भी बुला सकते हैं। नाउ एक बात मैं सी द डेटा ऑफ एवरी सेल हियर रिप्रेजेंट्स फैक्ट। यस, तो जब भी मैं कहता हूं कि फैक्ट है, इस रीजन के इस महीने में इस मोबाइल हैंडसेट के इतने पीस बिके हैं, व्हेनेवर वी से फॉर दिस रीजन फॉर दिस हैंडसेट दीस मेनी पीसेस आर सोल्ड, इट इज व्हाट इज अ फैक्ट। नाउ अब सर कि मल्टी डायमेंशनल अरेंजमेंट का फायदा क्या होता है? द एडवांटेज of above multi-dimensional arrangement allows us to implement various OLAP operations. OLAP stands for online analysis, right? And processing. So ये जो मैं multi-dimensional data से जब मैं डेटा करता हूँ, इसको हम कहते हैं OLAP operation. Now dimensional analysis में हमें OLAP operation बोला again. In dimensional analysis, the two most common operations in OLAP are, आपने नाम सुना होगा? पहला roll up operation. Have you heard this name? नहीं सर। What is roll up operation? What is roll up operation? चलो, give me an example. रोल अप करना मतलब छोटी छोटी चीजों को रोल करके बड़ा करके करना। यस, सो रोल अप मतलब क्या? पहले अभी कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, उसे कहते हैं सी ऑब्टेनिंग जनरलाइज्ड, और ये टर्मिनोलॉजी आपके पास होंगे, और एग्रीगेटेड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम करंट लेवल इज कॉल्ड रोल अप ऑपरेशन। मतलब मैंने करंट लेवल से मुझे एग्रीगेटेड या जनरलाइज्ड डेटा ऑब्टेन करना। फॉर एग्जांपल बताओ, ऑब्टेनिंग क्वार्टरली बेसिस प्रॉफिट फ्रॉम मंथली बेसिस प्रॉफिट। ना चलो मेरे पास ये जो डेटा है, ये क्या बताएगा? ये क्या होता है? कौन सा प्रोडक्ट कौन से रीजन में कौन से मंथ में आपके पास 12 महीने होंगे। मैंने तो कोई 12 नहीं बनाए, मैंने तो चार्ट बनाए। बराबर। सो मैंने जो आपको बताया क्या बताया? प्रोडक्ट 1 रीजन R2 मंथ 2। ध्यान से। सो प्लीज फोकस, रोल ऑपरेशन। ये क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट P1 रीजन R2 मंथ 2। ये क्या होगा? ये क्या होगा? प्रोडक्ट P1 रीजन R2 मंथ 1। ये क्या होगा? प्रोडक्ट P1 रीजन R2 मंथ 3। अगर मैं ये तीनों से का डेटा ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक प्रोडक्ट के लिए डेटा। इसको रोल ऑपरेशन समझे? ओके, समझ गए? एक से ज्यादा क्यूब के जो सेल्स उनको मर्ज करेंगे। यहां मैं मर्ज करूंगा डायमेंशन अक्रॉस मंथ डायमेंशन। अभी मुझसे किसी ने ऐसा पूछा कि प्रोडक्ट P1 का मंथ 1 का हर रीजन टोटल सेल बताओ। सो ये क्या होगा? समझ गए? अगर मुझसे किसी ने पूछा कि हां प्रोडक्ट P1 रीजन R1 मंथ 1, प्रोडक्ट P1 रीजन R2 मंथ 1, प्रोडक्ट P1 रीजन R3 मंथ 1, प्रोडक्ट P1 रीजन R4 मंथ 1, प्रोडक्ट P1 रीजन R5 मंथ 1, अगर मैं ये सारे क्यूब के सेल्स को ऐड कर देता हूं तो मुझे एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा ओवर द रीजन। सो हियर आई कैन से आई एम रोलिंग अप ओवर द रीजन डायमेंशन। जब मैं क्वार्टरली मांग रहा हूं, आई एम रोलिंग अप ओवर द मंथ डायमेंशन। अगर मैं कहता हूं रीजन R1 मंथ 1 मेरे को सारे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, तो आई एम रोलिंग ओवर दिस डायमेंशन। प्रोडक्ट समझ रहे हो? रोलिंग अप कैन हैपन ओवर पर्टिकुलर डायमेंशन। आई मेक सेंस? मल्टीपल डायमेंशंस मतलब क्या बोल रहा हूं? मल्टीपल डायमेंशंस पॉसिबल। हां, इट कैन बी पॉसिबल डायमेंशन आल्सो। It is possible over more than one dimension also. I can roll over more than one dimension also. So I can also say for all the product, all the region 1 or for all the product, all the region quarterly. अब ये सवाल आएगा, समझा? अच्छा। So obtaining quarterly basis profit from monthly basis profit by merging the cell of Q along the month dimension. Also, the merging can be done also over region of product.
इसका क्लियर? ये तो सेल की तरह बेटा, यहाँ पे 3 कॉलम है, आप समझे नहीं? आप इसको कैसे लिखोगे? आपका डेटा 3 डायमेंशनल फॉर्म में है, आप डेटा जैसा स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको 3 कॉलम में समझो बेटा, ठीक है? विजुअलाइज करो। चलो, अच्छा ये क्या हो गया? रोल अप, ये क्या हो गया? रोल अप। सेकंड है समथिंग कॉल्ड ड्रिल डाउन, इसको लिखा ड्रिल डाउन ऑपरेशन है। नाउ ड्रिल डाउन ऑपरेशन क्या है? यहाँ रोल क्या होता है? रोल क्या होता है? करंट लेवल से एग्रीगेटेड लेवल का डेटा चाहिए, यानी करंट सेल, बहुत सारे करंट सेल को मर्ज करके एक जनरलाइज्ड डेटा चाहिए, एक एग्रीगेटेड डेटा चाहिए। ड्रिल डाउन क्या बोलेगा? ड्रिल डाउन क्या बोलेगा कि आपको डिटेल जैसे मंथली से वीकली चाहिए, हमने क्या किया था? हमको क्वार्टरली चाहिए था, तो हमने 2-3 महीने के डेटा को मर्ज करके क्वार्टरली बना दिया। बट अगर हमारे पास मंथली है, ये जो डेटा है, ये तो मंथली डेटा है, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, अगर इस मंथली डेटा से मुझे कोई बोला कि वीकली डेटा बनाओ, वीकली डेटा बनाओ, तो यहाँ क्या करंट लेवल से एग्रीगेटेड डेटा जनरेट कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम करंट लेवल से एग्रीगेटेड डेटा या जनरलाइज्ड डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, रोल अप। ड्रिल डाउन क्या कहता है? ऑब्टेनिंग डिटेल, नॉट एग्रीगेटेड, डिटेल, इसको डिटेल लेवल, नॉट एग्रीगेटेड, ऑब्टेनिंग डिटेल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम करंट लेवल is called drill down operation. Example, obtaining weekly basis profit from monthly profit. इसके लिए हमको रोल अप करना पड़ेगा। अब ये जो एक सेल है, इस सेल को क्या करना पड़ेगा? वीकली डेटा चाहिए तो स्प्लिट करना पड़ेगा, सेल को स्प्लिट करना पड़ेगा अक्रॉस मंथ डायमेंशन। अब जैसे अगर रीजन मतलब सिटी, अब सिटी के अंदर मुझे सबब, जैसे मुंबई, मुंबई का पूरा मुंबई का डेटा एक जगह है सेल के अंदर, मुझे पता करना है कितना 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 कितना, अब मुझे अक्रॉस रीजन स्प्लिट करना पड़ेगा। तो जब भी हम करंट लेवल से डिटेल में जाएंगे तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ हम करंट लेवल से कहां जाएगा? डिटेल में जाएगा और माइन्यूटली स्टडी करने जाएंगे। सो ऑब्टेनिंग वीकली बेसिस प्रॉफिट्स फ्रॉम मंथली प्रॉफिट कैन बी डन बाय splitting the sets across one or more dimension. I hope roll up or drill down में कोई difficulty? Roll up or drill down में कोई difficulty? सर हाँ बोलो। सर रोल अप में जो डेटा आएगा वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट आएगा। ड्रिल डाउन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो डेटा मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा। Drill up जवाब बेटा मैंने आपको ये रीजन मंथ वाइज है, आप सोचो आपके दिमाग में कैसे कैसे करेंगे? बेटा ये तो हमने मंथली डायमेंशन किया है, आपको एक्चुअली पूरा डिटेल से बहुत कंफ्यूज कर रहा है। इससे क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला? मेरा ये डेटा हाउस होगी, दिस इज नॉट डेटा हाउस। सर ये केस अगर ये केस हाँ अगर हमने बोला कि डेटा इज अरेंज्ड मंथ वाइज तो उससे अगर हमें चाहिए कि वीकली प्रॉफिट निकाले, वीकली फैक्ट्स निकाले, I will calculate data warehouse using this cell. एक मिनट प्लीज, this is not data warehouse. This is a multi-dimensional data generated for this request. Particular handset, particular region, particular month. अब अगर ये मेरे मेरे पास एक डेटा आ गया, मैं बोलूंगा यार मंथ का डेटा आ गया, मेरे को वीक का डेटा चाहिए, I have to go back to my data warehouse बेटा। I have to go back to my data warehouse जहाँ पे हमने डेटा एग्रीगेट किया होगा। एक बात समझो बेटा, अब हमारे पास जो ऑपरेशन डेटा जनरेट हुआ होगा, मंथ वाइज होता नहीं, वो तो डेली होता होगा। हमने कहीं पे डेटा को वीकली में कंबाइन किया होगा, वीकली को मंथली में कंबाइन किया होगा। और जब मेरे यूजर ने उससे कहा कि पर्टिकुलर मंथ का डेटा चाहिए, तो ये जो मेरा डायमेंशन, इसमें डायमेंशनल एनालिसिस, दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस, दिस क्यूब इज जनरेटेड फॉर दिस रिक्वेस्ट, दिस इज नॉट माय डेटा वेयरहाउस। तो the moment I have been asked to drill down the data, I go back to my data warehouse and we check कि भाई ये मंथ का वीकली का क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वहां तो आर्काइव डेटा भी है, हमने कहा मेरे ईडब्ल्यू में मेरा आर्काइव डेटा है, एक्सटर्नल डेटा है, कंप्यूटर डेटा है, प्राइवेट डेटा है, सारे डेटा होगा ना। यस मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रैनुलरिटी के बाद हम लोग हर तरीके के डेटा मतलब जैसे चाहिए कंप्लीट आपको याद होगा, यस आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, कंपैरिजन करा था ना, ये ग्रैनुलरिटी का वर्ड यूज किया था। ये देखो कि डेटा बहुत छोटे छोटे ग्रैनुल्स में स्टोर करके रखा है उसने, क्यों मुझे पता है कौन से ग्रैनुल्स को इकट्ठा करके मुझे बड़ा डेटा बनाना है, समझ रहे हो? ऐसा समझा मैं कहीं ग्रैनुल वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं बट आई स्टिल रिमेंबर मैंने डिस्कस किया हम डेटा को माइन्यूटली ग्रैनुल्स में डिवाइड करते हैं, क्यों मुझे पता नहीं कब कौन से वो ग्रैनुल्स को ऐड करके मुझे बड़ा डेटा बनाना पड़ेगा, कब बड़े डेटा से ब्रेक करके मुझे ग्रैनुल्स की जरूरत है। आई नेवर नो व्हेन आई परफॉर्म रोल अप और ड्रिल डाउन, ये तो ऑपरेशन में वर्क है, ये ऑपरेशन है। आपको एग्जाम में पूछा तो व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशन? वन इज रोल अप वेयर वी ऐड द सेल्स, मल्टीपल सेल डेटा, ड्रिल डाउन वेयर वी ब्रेक द सिंगल सेल डेटा, थर्ड ऑपरेशन इज स्लाइसिंग, थर्ड ऑपरेशन इज कहीं ना इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हमारे डेटा को डेली बेसिस पे स्टोर करना है, उससे अगर मंथली बेसिस का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंकंसिस्टेंट नहीं कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट सेक्रेटरी बेटा तो मंथली मतलब अवेलेबल आप बोलते हो आप पोटेंशियल चाहिए डेली मतलब आपके एक दिन के पास होने वाली हम ऑपरेशन करते हैं, डेटा में डेटा कब जाएगा ये बड़ी है नहीं, पहले बहुत सारा डेटा जनरेट होगा 2-4 साल तक, फिर इनिशियल लोडिंग में इनिशियल एक ही बार होता है। हां और ये तो बात करना ये इंक्रीमेंटल डेटा हो जाएगा बेटा, इंकंसिस्टेंसी को ऐसे सोचिए मत, ये तो मेरा इंक्रीमेंटल डेटा में थोड़ा अमाउंट आएगा, कहां से इंकंसिस्टेंसी आएगा बेटा? ओके सर मैं क्या कहता इंक्रीमेंटल डेटा बहुत छोटे प्रोपोर्शन में होता है। ओके सर सी मैं इसका आपको बार-बार आपके दिमाग में डेटा भेज रहा मैंने कहा कि 4-5 साल तक डेटा हो रहा है, अब मेरा सिस्टम बहुत बड़ा हो गया है, अब जब तक सिस्टम बड़ा होगा मैं एनालिसिस करूंगा नहीं, तो इनिशियल लोडिंग में मैंने आपको इनिशियल लोडिंग में टेक सम डेज, और दूसरी बात इंकंसिस्टेंसी का चांस इंक्रीज करना है और सिर्फ ये ऑपरेशन करना है। हां सर इसलिए वो स्टार्टिंग साइड डिस्कशन किया। चलो देयर समथिंग कॉल्ड स्लाइसिंग, चलो इसमें स्लाइसिंग मतलब क्या हो? अगर एक डाटा को स्लाइस कर लेगा यार, मैं क्वेश्चन बता वन सेल नहीं आर्काइव जस्ट रीड आउट क्वेश्चन दैट मींस वन स्लाइस ऑफ डेटा, इफ द स्लाइसिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग कैन बी वर्टिकल। और कोई वन प्रोडक्ट के सब प्रोडक्ट के सब रीजन का सेलिंग करेगा। अगर आप मुझे किसी एक प्रोडक्ट का पूरे रीजन का डेटा मांगो, सारे जैसे ऑफ ए अर्बन रीजन का मुझे सारे प्रोडक्ट का डेटा मांगो, तो ये पूरा मुझे करना पड़ेगा। विजुअलाइज को क्यों कैसा दिख रहा है? आपने उसे क्या माना देखो कलर कलर कौन सा कलर, यस आपने उसे डेटा ये पूरा स्लाइस करके काट के बराबर नहीं ये हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि रीजन 1 का हर प्रोडक्ट का सेल्स चाहिए, मुझे रीजन 1 का हर प्रोडक्ट का हर मंथ का सेल्स चाहिए, तो पूरा फर्स्ट रो ही आपको काट देना पड़ेगा आर1 वाला, यस और नो? हां सर हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोडक्ट P1 का देखो हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग में बोलूं प्रोडक्ट P1 का देखो, P1 का मुझे हर रीजन का हर मंथ का डेटा चाहिए, तो ये जो पहला लेयर है आप वर्टिकल स्लाइस करोगे देखो ये ना क्यूब का मैं क्यूब को इस व्यू में देखूंगा, तो ये पहला लेयर में काटूंगा, दूसरा लेयर P2 का होगा, तीसरा लेयर P3 का होगा, चौथा लेयर P4 का होगा। कैन यू विजुअलाइज? हां सर इसको yes इसको we call it slicing, so slicing can be horizontal, slicing can be vertical, and this is the third operation which is very important question that can be asked in exam is it is used to perform detailed analysis on selected part of the cube. Example, analyzing profit for all the products in specific region for all the month. चलो ऐसा करते हैं, let me write like this, all the product in all the region for particular month. अच्छा अगर मैंने ऐसा कहा और मैंने आपसे कहा ये प्रोडक्ट है और ये रीजन है और ये आपका मंथ है, सपोज कैसे यहाँ से लिख सकते हो? मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मैंने क्या बोला फॉर ऑल द प्रोडक्ट, यानी पूरा टॉप आ जाएगा इन ऑल द रीजन फॉर पर्टिकुलर मंथ को मैं बोलना तो ये बस स्लाइस आएगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना। हाँ सर, ये बस स्लाइसिंग हो गया, हियर इट इज वर्टिकल स्लाइस, बराबर। लेकिन मैंने आपसे पूछा एनालाइजिंग प्रॉफिट फॉर ऑल प्रोडक्ट इन ऑल द मंथ ओवर स्पेसिफिक रीजन। If I say month 1, month 2, month 3, R1, R2, R3, P1, P2, P3, if I want to do it here, product, region and month. R1, R2, R3, M1, M2, M3, P1, P2, P3. Now यहाँ पे होगा region R1, ये पूरा slice मानना पड़ेगा, सबको ऐसे काटनी पड़ेगी, इसको क्या बोलेंगे, here it is, horizontal slice. तो जब भी मैं किसी एक डायमेंशन का कंप्लीट डेटा चाहिए, detailed analysis of selected part मतलब specific dimension. मेरा यहाँ डायमेंशन मंथ था, यहाँ डायमेंशन मेरा रीजन है, तो हम स्लाइसिंग कहते हैं इसको, वो भी स्लाइसिंग नहीं, इट इज नॉट रोल अप बेटा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, इट इज नॉट रोल अप। नाउ डाइसिंग क्या हो सकता है, कैन यू गेस डाइसिंग, कैन यू गेस डाइसिंग, what operation on overlap is डाइसिंग, कैन यू गेस डाइसिंग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लाइसिंग सर, एग्जैक्टली छोटे रीजन, यानी बड़े से ऊपर छोटे रीजन के आगे निकलना है, बराबर। अगर क्वेश्चन है if user wants to perform analysis of three regions R1, R2, R3 for first 2 months, बराबर, कैसे बनेगा ये M1, M2, M3, R1, R2, R3, मैं R2 बता रहा हूँ, नहीं लिखेगा, तो for 2 months, बराबर। तो क्या होगा 2 month यानी ये 2 महीने यानी ये, और समझो 2 प्रोडक्ट P1, P2 for 2 products, कैन यू इमेजिन क्या होगा, ये छोटा सा डाइस करके आएगा, सी वो 2 डायमेंशन में विजुअलाइज करना, आप 3D में देखो, जस्ट अ सेकंड, let me try to okay just I wish I am looking for some animation. I could not find. I was looking for some animation video. Okay. Can you see the screen is right? Hello, am I audible? yes sir, Okay. So I hope you visualize slicing. Let me focus here T1 and T2. तो यहाँ पे slicing नहीं work करेगा क्योंकि एक एरिया में I have जब एक कोई डायमेंशन एक पूरा एरिया निकलता है, जैसे मैं पूरा रीजन तो एक कट होगा सारे प्रोडक्ट रीजन R1 सारे प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल रीजन सारे रीजन प्रोडक्ट T1 वर्टिकल या ओवर जब भी मेरा क्वेश्चन आता है मैं किसी एक डायमेंशन को कंप्लीट करता हूं, जब भी मेरा क्वेश्चन में किसी एक डायमेंशन को कंप्लीट करूंगा वो स्लाइसिंग होगा, दैट मींस स्लाइसिंग ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नाउ हियर द स्लाइसिंग ऑपरेशन will not be helpful. The user need to take part of यानी छोटा सा क्यूब बनाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, part of cube under focus or observation known as dicing. तो बेसिकली क्यूब का छोटा सा क्यूब इज डाइसिंग। नाउ जस्ट हैव अ लुक, अगर मैं ये व्यू से इस क्यूब को देखता हूं, अगर मैं इस व्यू से क्यूब को देखता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, मेरे ये डायमेंशन मुझे क्या मिल रहा है, मंथ रीजन और ऊपर लेफ्ट बराबर। बेटा क्यूब भले ही 3D है लेकिन आपको दिखता क्या है, आपको 2D दिखता नहीं है ना, अगर यूजर ऐसे बैठा है ऐसे देख रहा है उसको 2 डायमेंशन कौन से दिख रहा है, मंथ है रीजन, यस और नो। हेलो सी रोटेशन इज द नेक्स्ट ऑपरेशन, इसको पी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्यूब इज 3D बट यूजर कैन सी 2D only with rotation the dimension under focus changes. Now example में अगर यूजर इस तरह से देख रहा है, so the dimension under focus is month and region, मैं क्यूब को रोटेट कर रहा हूं, अगर मैंने क्यूब को रोटेट किया, अगर मैंने क्यूब को ऐसे रोटेट किया तो डायमेंशन under focus क्या देगा, month and product, can you see, can you visualize this? हाँ सर, So dimension under focus भी तो बेटा रोटेशन का एक ही यूज है, it is used to analyze same data with different perspective. सर आप कैसे बोल रहे हो, एग्जांपल now अगर ये डेटा है तो यहाँ मुझे मिला the dimension under focus is region and month, तो अगर ये डेटा देखो समझो ये डेटा मैंने कहा था आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको डायमेंशन रीजन मिलेगा, so it is M2 month and R2, और समझो यहाँ पे मेरे पास मेरे पास दो चीजें होंगी, दो चीजें हैं, क्या है, the unit sold, सबने कहा 20 यूनिट सोल्ड हुआ और 20,000 रुपए मैंने कमाए, करेक्ट, डेटा तो यही है, दो यूनिट 20 यूनिट सोल्ड किया और मैंने 20,000 रुपए कमाए, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, here we can see in region R2 in month M2 20 units sold, profit on 10. Now rotate with rotation, मैंने रोटेशन परफॉर्म किया, करेक्ट, अब मेरा डायमेंशन चेंज हो गया, अब मेरा डायमेंशन कैसे होगा देखो, अब मैंने कहा कि अब ये परफॉर्म रोटेशन, तो मतलब ये ऊपर जो नंबर है तो मतलब नीचे जाएगा और ये हो गया P1 P2 P3, ये हो गया R1 R2 R3, अभी ये जो डेटा है ये 20 कॉमा सपोज ये है, सपोज तो मैंने कहा यहां पे क्या बोलेंगे, हियर डायमेंशन अंडर फोकस इज प्रोडक्ट एंड मंथ, तो अगर यहां पे 20 और 20,000 है तो क्या बोलेंगे, सो हियर वी कैन सी इन मंथ M2 फॉर प्रोडक्ट P2 the 20 units sold
and profit earned is 20,000. So हमने बात किया रोटेशन, क्यूब के रोटेशन की वजह से हमारा क्यूब हमको 3D दिखता नहीं, हमको 2D दिखता है, तो मेरे जो व्यू है उस व्यू में वो दो एक्सिस कौन है उसके हिसाब से जो वैल्यूज उनके इंटरप्रिटेशन चेंज होते हैं, वही अगर 20,000 दिखा है तो मैं बोलूंगा रीजन R2 मंथ M2, पर यहां पे मैं क्या बोलूंगा मंथ M2 बट प्रोडक्ट P2 because now my focus of dimension changes. Now अब यहां पे थोड़ा सा कैच ये है कि if more than 3 dimensions, सर अगर यूजर ने चौथा डायमेंशन लिया है तो यूजर के क्वेश्चन के ऊपर है, यहां यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, तीन चीजों के बारे में ध्यान दिया, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रीजन, कौन सा मंथ, इसलिए हमारा 3 dimensional analysis चाहिए. Again let me enforce, it is not my data warehouse, it is the 3 dimensional analysis generated for this particular question. If in the question there are more than 3 dimensions, if in the question there are how many males and females have purchased the handset, so one more dimension, the dimension is gender. So the moment if my analysis is कि कौन से महीने में, कौन सा रीजन में, कौन सा प्रोडक्ट, कौन से जेंडर के लोगों ने खरीदा है, the moment my one more dimension is added, now the things become more complex because now Q cannot be used. तब क्या करेंगे, if more than 3 dimension, human cannot view the analysis model. So we need क्या लगेगा हमें मल्टी डायमेंशनल क्यूब. अब हमें एक क्यूब नहीं लगेगा, मल्टी डायमेंशनल क्यूब लगेगा. मल्टी डायमेंशनल क्यूब क्या कहते हैं बेटा? एरे ऑफ क्यूब. इसे क्लास में क्या बोलते हैं? हाइपर क्यूब. सो वी विल नीड हाइपर क्यूब. इज दैट क्लियर? सो ये हमने अभी प्राइमरी यहाँ पे डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया अभी ऑपरेशनल सिस्टम जैसे हमने देखा रिपीटेटिव होता है, हमें पता है क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल्स में ऐसे होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नहीं होता है, हमें पता डिजाइन करना इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं यूजर क्या क्वेश्चन पूछेगा. तो इसलिए यूजर जो भी क्वेश्चन पूछेगा इट विल इन्वॉल्व मोर देन वन डायमेंशन. एग्जांपल मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया उसमें 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है, तो अगर मुझे एनालिसिस करना है जिसमें 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है या एक से ज्यादा डायमेंशन इन्वॉल्व है, हम इसे डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस जो भी एनालिसिस में हर डेटा है, इस क्यूब का हर सेल है, उसे हम फैक्ट कहते हैं, बिजनेस मैट्रिक्स कहते हैं या बिजनेस मेजर्स भी कहते हैं. एडवांटेज क्या है सर, अगर आप अपने डेटा को इस क्यूब फॉर्म में ऑर्गेनाइज करोगे, once the data is successfully organized in form of cube, then there are various collab operations that is supported, roll up, drill down, slicing, it can be horizontal, vertical, dicing and rotation. Is that clear everyone? Yes, sir. Okay, so इसको मैंने आपको शेयर किया Yes, किया है ना? सही बात है सर. Okay, just give me one sec. बेटा देखो मैंने कहा I agree with the fact that these are practical 100% agree. बट ये समझने के लिए आपको काफी काम में आएगा जब हम माइनिंग करेंगे. वो क्या वो उनका कंसिडरेशन है कि around 30% of the syllabus involves warehousing and remaining 70% of the syllabus involves mining. And when we will be studying the algorithms of mining, these terminology will come to be very handy. Next session I guess we should finish this warehousing part. Let me share the once again. Okay, share copy link manage access. Anyone with the link done? Please check the meeting data chat में. मैं अभी PDF अपलोड करता हूं अभी. ठीक है? And everyone, you got it? Yes, sir. Take it. Today's date is 6 August. अभी अपलोड करता हूं. ठीक है? चलो, thank you very much. Good night everyone. Take care. Thank you, sir. The cube involving more than kindly confirm. Yes. Okay. So let me share the screen. In the last lecture, let me share the screen. In the last lecture, we talked about various OLAP operations. And okay. Yes, here we go. In the last lecture, we talked about various OLAP operations. And if you can see, it was dimensional analysis. Then what we discussed is every single data points in that cube represents a fact. We call them as fact. We talked about अगर मैं करंट लेवल से एग्रीगेटेड लेवल पे जा रहा हूं, जनरलाइज लेवल पे जा रहा हूं, हम उसे रोल अप ऑपरेशन कहते हैं. फ्रॉम करंट लेवल इफ आई एम गोइंग डिटेल्ड लेवल यानी लोअर लेवल, वी कॉल इट एज ड्रिल डाउन ऑपरेशन. देन वी हैव स्लाइसिंग, कैन बी हॉरिजॉन्टल, कैन बी वर्टिकल. स्लाइसिंग कब होता है? व्हेन वी वांट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ डायमेंशन, तो स्लाइसिंग होता है. We talked about horizontal and vertical slicing. Then we talked about dicing, where we take out a part of the cube, a portion of the cube involving more than one dimension. That's dicing.
देन हमने कहा कि विथ रोटेशन हमारा जो फोकस है डायमेंशन का वो चेंज होता है। हमने एग्जांपल लिया कि अगर ये मेरा क्यूब है, मेरा डायमेंशन अंदर फोकस है मंथ एंड रीजन, बट अगर मैं रोटेट करता हूं क्यूब को तो यहां पे देखिएगा मेरा डायमेंशन अंडर फोकस है month and product. So this is where we stopped. Now today we will start with data mining. Can we start, beta? Yes. So आज हम डेटा माइनिंग के ऊपर बात करेंगे। डेटा माइनिंग में हम सबसे पहले शुरू करेंगे केडीडी ऑपरेशन से, जो भी स्टेप्स है। सो लेट अस स्टार्ट विथ डेटा माइनिंग। मैं वीडियो को स्विच ऑफ कर देता हूं। लेक्चर 4 नोट्स। ओके ना, हमने कहा कि हम, प्लीज लिसन एवरीवन, हमने कहा कि हम डेटा वेयरहाउस में हिस्टोरिकल डेटा, आर्काइव डेटा, करंट ट्रांजैक्शन डेटा, हम ये सारे डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। हम ये डेटा क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि मुझे उस डेटा में से इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू डेटा माइनिंग, हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो है केडीडी स्टेप्स। सर ये केडीडी क्या होता है? इट इज नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। फ्रॉम द डेटा, जो हमने डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया है, हमें उसमें से नॉलेज डिस्कवर करना है ना। when it comes to steps of KDD बेटा, इसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं। एक प्री प्रोसेसिंग, देन कम्स डेटा माइनिंग, एंड देन कम्स पोस्ट processing. Now, when it comes to pre-processing, in pre-processing we have data selection, we have data cleaning, we have data integration, and we have data transformation. ये जो चारों स्टेप है, ये चारों स्टेप टुगेदर वी कॉल इट एज प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। फर्स्ट, सी आवर डेटा वेयर हाउस इज वेरी लार्ज, but when we want to perform the operation, not necessarily we will perform operation on the very large data warehouse. So we will first identify the data that we want to investigate. Then comes data cleaning. There may be a lot of noisy data, some null values, missing values, inconsistent or incorrect values. We will remove these values. Then as we are aware, the data in the data warehouse, it comes from different sources. And these data coming from different sources will tend to have different internal format. ऐसे सारे डेटा को हम सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डेटा इंटीग्रेशन। एंड फाइनली it is data transformation, where all the value actually got convert in the form needed by the model. ये चारों स्टेप जिसको हम प्री प्रोसेसिंग स्टेप कहते हैं, उसके बाद हम डेटा माइनिंग के स्टेप्स करेंगे। डेटा माइनिंग में क्या करते हैं वो हम देखेंगे। इतना समझ लीजिएगा, डेटा माइनिंग के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स आएंगे, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है पैटर्न इवैल्यूएशन, एंड नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। सो ये सारे बेसिकली हमने कहा कि केडीडी, आपके पास जो डेटा है उसमें से आपको नॉलेज चाहिए। बेसिकली नॉलेज डिस्कवर करने के 3 स्टेप्स होते हैं। डेटा को प्री प्रोसेस करना, फिर हमारा डेटा माइनिंग, जो भी मॉडल्स है, जो भी एल्गोरिथम है, वो क्या करेगा, डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेगा।
बहुत सारा नॉलेज एक्सट्रैक्ट करता है बेटा, बहुत सारा हिडन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है डेटा माइनिंग द्वारा। नाउ डेटा माइनिंग ने जितने भी हिडन इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करके दिए हैं, जरूरी नहीं है हमें वो सारे चाहिए। हम उसमें से क्या करेंगे, हमको जो चाहिए वो हम इवैल्यूएट करके रिट्राइव कर लेंगे, विच कम्स अंडर पैटर्न इवैल्यूएशन। और फाइनली वो जो डेटा है वो यूजर को समझ में आए ऐसे फॉर्म में हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट कम्स अंडर विजुअलाइजेशन। So this is a very important question when it comes to data mining. This is the first thing that we will discuss in data mining, which is KDD, knowledge discovery from data. Let us see in details the steps. Steps are, सबसे पहले जब हम बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे? We will talk about data selection. Now, when I'm talking about data selection, how do we go about it? We will say my data warehouse is very large. We do not want to apply data mining. DM stands for data mining on whole data warehouse. हम ये डेटा माइनिंग है वो पूरे डेटा वेयरहाउस पे नहीं अप्लाई करने वाले हैं, हमारा एक स्पेसिफिक एरिया अंडर फोकस होगा, उस पे अप्लाई करना है। सो व्हाट वी विल से, डेटा रिक्वायर्ड फॉर investigation are selected from huge data set. अच्छा, ये बताइए बेटा, जैसे मेरा बहुत बड़ा डेटा वेयरहाउस है, ठीक है, जिसमें अकाउंट इंफॉर्मेशन है, सेल्स इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है। आई वॉन्ट टू परफॉर्म माइनिंग ऑन मार्केटिंग ओनली। सो उस बड़े से डेटा वेयरहाउस में से अगर मुझे सिर्फ माइनिंग का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, यानी उस बड़े डेटा वेयरहाउस में से मुझे सिर्फ उतना डेटा रिट्राइव करना है जो मेरे इन्वेस्टिगेशन को चाहिए, ये करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? वी कैन यूज एसक्यूएल क्वेरीज ऑन सेट ऑफ थिंग्स। आपने पढ़ा व्यू क्या, तो वर्चुअल डेटा होता है, तो बड़े से डेटा होता है, आपको छोटा डेटा चाहिए जिसका आप इन्वेस्टिगेशन करना है, वो हम कैसे करेंगे? आप एसक्यूएल क्वेरीज फाइंड कर सकते हैं और उसमें से जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आप कर सकते हैं। सो आफ्टर सबसे पहले स्टेप डेटा सिलेक्शन, कि बड़े से ईडब्ल्यू या बड़े से डेटा वेयरहाउस में आपको सारे डेटा नहीं चाहिए, हमेशा सारे डेटा इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, तो मेरे ऑपरेशंस जो मैं करूंगा वो फोकस डेटा सेट होनी चाहिए, जो हमें कहां से मिलेगा? डेटा सिलेक्शन से मिलेगा। हमेशा अगर डेटा सिलेक्शन के लिए आपको सिंपल स्टेप वेरीफाई करना है, आपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, मुझे कौन से डेटा पे डेटा माइनिंग परफॉर्म करना है, अब आपको क्या करना है? उस डेटा को क्लीन करना है, या आपके एग्जाम में आएगा डेटा क्लीनिंग। नाउ व्हेन इट कम्स टू डेटा क्लीनिंग, हम क्या बोलेंगे? डेटा सिलेक्टेड फॉर परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग कैन हैव नॉइसी डेटा। तो ये नॉइसी डेटा क्या होता है? मैंने कहा नॉइसी डेटा क्या होता है? नॉइसी मतलब क्या? अगर नल वैल्यूज है, अगर मिसिंग वैल्यूज है, अगर इनकंसिस्टेंट या इनकरेक्ट डेटा है, ये सारे टाइप के डेटा उसे हम नॉइसी डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेटा जिसको हमने डेटा माइनिंग के लिए सिलेक्ट किया था उसके अंदर नॉइसी डेटा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नॉइसी डेटा इज रिमूव फ्रॉम डेटा सेलेक्टेड। अगर ये नॉइसी डेटा रहा, इनकंसिस्टेंट डेटा रहा, तो इसका मतलब जो भी डेटा माइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ सच नॉइसी डेटा कैन रिड्यूसेस एक्यूरेसी ऑफ डेटा। जो भी हम यूज करेंगे डेटा मतलब आपने क्या किया? सबसे पहले आपने डेटा सेलेक्ट किया, अब आपने डेटा को क्लीन कर लिया है। अब ये जो डेटा आइडेंटिटी अलग सोर्सेस से डेटा है, आपने जो डेटा क्लीन किया है, अब उस डेटा को क्या करना है? आपको इंटीग्रेट करना है, डेटा इंटीग्रेशन। तो हम डेटा इंटीग्रेशन क्या करेंगे? समझिए कि डेटा वेयरहाउस जो आ रहा है वो अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, तो ये सारे डेटा में अलग अलग इंटरनल फॉर्मेट हो सकते हैं। एग्जांपल, कोई कैरेक्टर को यूनिकोड फॉर्मेट में रखेगा, कोई ASCII फॉर्मेट में रखेगा। हम चाहते हैं कि जब भी हम सारे डेटा को इकट्ठा करें हम उसको एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। व्हाट वी लाइक इज डेटा इन डेटा वेयरहाउस comes from different sources. Data from different sources likely to have different internal format. Example, some may store characters in ASCII, some may store characters in Unicode. अलग फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन क्या करेंगे? Here all data is converted into single standard format. आप बोल सकते हैं इसमें single standard format में क्या हो सकता है? हम ऐसा बोल सकते हैं, example, convert all characters into unique. ये डेटा इंटीग्रेशन है। एक बार आपका डेटा इंटीग्रेट हो गया है, अब आपको क्या परफॉर्म करना है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे हमारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ आप ये सोच सकते हैं डेटा माइनिंग आपने वर्ड करके एक्सप्लेन किया जाता है या फिर चालू कर दिया। ये डेटा माइनिंग और ये जो हमने डेटा बनाया उसमें क्या फर्क है? वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस लाइक व्हाई वी नीड डेटा माइनिंग नाउ। नाउ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे सिर्फ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, डेटा जो भी हम प्रोसेस करेंगे डेटा को वो डेटा माइनिंग को फीड किया जाता है। तो डेटा माइनिंग के जस्ट पहले जो मेरा स्टेप परफॉर्म होगा वो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो मेरे डेटा माइनिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, जो मेरे बिजनेस लॉजिक के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल समझो मेरे डेटाबेस में जो मेरा टेंपरेचर है वो फ़ारेनहाइट में स्टोर किया है, जो कि काफी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन जब मैं डेटा माइनिंग ऑपरेशन करता हूं तो मेरे एल्गोरिथम में मैंने ऑपरेशन स्पेसिफाई किया है वहां अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो जितना टेंपरेचर है वो सेल्सियस फॉर्म में होना चाहिए फ़ारेनहाइट में। सो इन दिस स्टेप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमको वो सारे टेंपरेचर सेल्सियस फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। सो बेसिक आइडिया इन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो भी डेटा है वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो जो आपके डेटा माइनिंग को लगता है, जो आपके डेटा माइनिंग ऑपरेशन को लगता है। सो हम क्या कहेंगे? इन दिस स्टेप the data is converted into a form which is more suitable
for data mining operations. Example. नहीं बेटा डेटा इंटीग्रेशन डेटा माइनिंग का गोल सेम बिल्कुल नहीं है। अभी बात डेटा माइनिंग का आपको बोल रहा हूं, समझो चलो समझो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। प्लीज रिस्पेक्ट डेटा माइनिंग तो अभी बात नहीं, समझो कस्टमर टेबल है। कस्टमर टेबल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर नाम, कस्टमर आईडी, कस्टमर का एज, कस्टमर की क्या एक्टिव प्रोडक्ट खरीदे, कस्टमर की क्या एक्टिव प्रोडक्ट खरीदे, उनका आईडी, नाम, एज, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन जिसमें का एज या डेट ऑफ बर्थ, ये इंश्योर करना कि डेट ऑफ बर्थ देखो कस्टमर एक अलग फॉर्म में डेटा है, प्रोडक्ट एक अलग टेबल होगा, ऐसे हमको अलग अलग जगह से बहुत सारे डेटा आते हैं, हमें उसे इंटीग्रेट करना फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट डेटा रिप्रेजेंटेशन का, इसमें कहा अगर डेट ऑफ बर्थ DD MMYY है तो हर जगह जहां पे हम डेट फॉर्मेट स्टोर करेंगे, जैसे प्रोडक्ट में डेट ऑफ परचेज वो भी डेट है, कस्टमर में डेट ऑफ बर्थ भी डेट है, हमको ये इंश्योर करना कि डेट जहां भी रखेंगे कौन फॉर्मेट में रखेंगे, दैट इज योर इंटीग्रेशन का हमको ध्यान रखना है वो। पर डेटा में इतना लगे ना, इमेजिन करो ना, इमेजिन करो अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, फाइंड ऑल द कस्टमर ग्रेटर देन एज 40, कस्टमर ग्रेटर देन 40, आप क्या करोगे, सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज ग्रेटर देन 40, करेक्ट। तो अगर मैंने आपको बोला फाइंड ऑल द कस्टमर्स विद प्रोडक्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक, तो हमने प्रोडक्ट टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो अगर ये डेटा चाहिए तो भी आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर प्रोडक्ट टाइप इज electronics. Now, basically, to answer such question, tell me, do we need data mining? Come on, go. To answer such question, do we need data mining? Rajneil. नहीं सर, हाँ बेटा, नहीं सर, नहीं है। necessary चाहिए नहीं, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं चाहते। तो अभी बच्चे आपने क्वेश्चन पूछा, सर डेटा इंटीग्रेशन डेटा माइनिंग तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, अगर मैंने क्वेश्चन ध्यान दिया कि if customer purchased LCB, then what other product the customer is likely to purchase? अब क्या ये क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें से दे सकता हूँ? Yes? क्या ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ बेटा? इसमें से? बेटा? नो ये माइनिंग करना है आपको ना, एक्चुअली स्ट्रेट समझ जाना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन डेटा बेस एंड मतलब डेटा बेस एंड फॉर्म में या डेटा माइनिंग से। सो यहां पे रिलेशन निकालना है। एग्जांपल यहां पे मैंने आपको पूछा डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर ग्रेटर देन 40 एज, दैट यू कैन ऑलवेज आंसर मी यूजिंग SQL, बट इफ आई आस्क यू if the customer is a middle age customer, then what product he or she is likely to purchase? If the customer is middle age customer, then what product he or she is likely to purchase? Now tell me, can you answer this question using SQL? नो सर, Because it's knowledge, या मुझे एसोसिएशन लगेगा कि अगर ये कस्टमर खरीदता है तो ये खरीदने के क्या चांसेस है, तो हमेशा याद रखिएगा डेटा माइनिंग इज ऑलवेज डिफरेंट थिंग। यस ओके बेटा, चलो हम डिफरेंट कर दिया, बिल्कुल निश्चित रहिए, which already started with data mining. Even today we will learn a lot of things about data mining. Okay, इसमें कहा converting all temperature values into degree Celsius. ये क्या है? This is all part of transformation. तो यहाँ पे मेरा प्री प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है, यहाँ पे मेरा converting all temperature into degree Celsius if the data mining operations refers temperature in Celsius. ठीक है, ये हो गया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब मेरा स्टेप 5 आता है, जहाँ यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे क्या कहा, प्री प्रोसेसिंग होगा। अब हमको क्या करना है, डेटा माइनिंग ऑपरेशन। नाउ जैसे मैंने डेटा माइनिंग क्या होता है, इन दिस स्टेप वी विल अप्लाई सम इंटेलिजेंट एल्गोरिथम दैट विल स्टडी, वी विल अप्लाई इंटेलिजेंट एल्गोरिथम आर अप्लाइड ऑन प्री प्रोसेस्ड डेटा। व्हाई टू एक्सट्रैक्ट ये हिडन इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको थोड़ी देर एग्जांपल बताया कि कस्टमर ने क्या क्या खरीदा है, उससे अगर मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि कस्टमर फ्यूचर में क्या क्या खरीदेगा, उसके लिए हमारे पास एसोसिएशन रूल्स लिखेंगे। और मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि ये जो मैं कहता हूं एक्सट्रैक्ट हिडन फीचर्स, जब मैं कहता हूं एक्सट्रैक्ट हिडन पैटर्न एक्चुअली नॉट फीचर, क्योंकि जिसमें मेरा क्वेश्चन है अगर मिडिल एज कस्टमर है तो क्या ज्यादा खरीदने के चांसेस है। दीस आर हिडन पैटर्न्स जो हमको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, जो हमको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ये क्या कौन करता है, डेटा माइनिंग करता है। तो एक बार आपने डेटा को प्रोसेस कर दिया, उस डेटा पे इंटेलिजेंट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और उसमें से हिडन पैटर्न हम डिटेक्ट करेंगे, दैट इज योर डेटा माइनिंग। इन स्टेप 6 में कहा नाउ वी विल परफॉर्म पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग का क्या है, पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब मैंने आपसे कहा कि जब डेटा माइनिंग करेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की हो। मैंने कहा जरूरी नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की हो, तो हमारी अब इसका मतलब जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें से हमको ये देखना पड़ेगा कि काम का डेटा है। एग्जांपल अगर कस्टमर बहुत सारी चीजें खरीदता है, ध्यान देना, कस्टमर बहुत सारी चीजें खरीदता है तो एक हिडन पैटर्न ये मुझे पता चला, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। Now we have pre-processed customer data, we have pre-processed customer data, and on that data we apply data mining. Now the job of data mining is it will study the customer data and it will display some hidden patterns that it understood from the data. तो उसमें से एक hidden pattern suppose ये आया, एक hidden pattern suppose ये आया कि कस्टमर जब भी ब्रेड खरीदता है कस्टमर बटर भी खरीदता है। suppose एक hidden pattern ये आया कि कस्टमर जब भी ब्रेड खरीदता है कस्टमर बटर भी खरीदता है। और बताइए मुझे, am I really interested in knowing this? No। तो ये क्या hidden information है, तो कहने का मतलब है कि जब भी हम डेटा माइनिंग ऑपरेशन लगाते हैं वो बहुत सारे hidden पैटर्न मुझे डिस्प्ले करता है। मेरे को सारे पैटर्न्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मेरे लिए जो यूजफुल पैटर्न है वही कंसीडर किए जाएंगे। जो पैटर्न मेरे लिए यूजफुल नहीं है वो पैटर्न को हम डिस्कार्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ध्यान से अगर मैं डीमार्ट को एनालाइज करना है, जैसे मैंने कहा अगर डीमार्ट में कस्टमर के परचेज पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है, सो जब वो डेटा माइनिंग करेगा उसको पता चलेगा कस्टमर खरीदता है, खरीदता है, वो नो इन्फॉर्मेशन मेरे को, टेल मी समथिंग आई डोंट नो, नॉट फिटिंग दैट। हमको क्या इंटरेस्ट है, मंथली सेल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो आउट ऑफ ऑल द हिडन पैटर्न वन पैटर्न इज व्हेनेवर कस्टमर बाय ब्रेड इट आल्सो परचेज बटर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पैटर्न। सो मुझे जितना भी पैटर्न रिजल्ट मिलेगा मुझे ये सारे पैटर्न को इवैल्यूएट करने हैं। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पैटर्न इवैल्यूएशन। तो पैटर्न इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, ऑल द एक्सट्रैक्टेड हिडन पैटर्न्स generated by data mining might not be useful to the user. User useful नहीं होगा। Example for consumer store when data mining is performed, it may generate hidden pattern as bread butter. मतलब ये मेरा association rule है, जब भी bread खरीदेगा butter भी खरीदेगा, but user is not interested in this pattern. Instead, user wants to know the monthly sale on particular product. तो मुझे ये पैटर्न है, तो भाई वो क्या करेगा, मुझे बहुत सारा पैटर्न देगा, मेरे काम का सारा पैटर्न नहीं है। सो इसीलिए इन दिस स्टेप द एक्सट्रैक्टेड पैटर्न आर इवैल्यूएटेड। जितने भी पैटर्न मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं सब इवैल्यूएट किए जाएंगे अगेंस्ट यूजर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का कंडीशन यूजर बताएगा कि मुझे कौन से पैटर्न में इंटरेस्टेड है। जैसे मैंने कहा यूजर को मंथली सेल्स में इंटरेस्टेड है, ये मेरे यूजर का थ्रेशोल्ड है। ब्रेड परचेसेस बटर, दिस इज आल्सो पैटर्न, बट इट इज नॉट satisfying the user threshold of calculating the monthly sale on a particular product. That could be anything. So अगर जो पैटर्न है वो मेरे यूजर के थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट जा रहा है, तो इट इज and the pattern that are interesting
are further considered unuseful pattern are described. ओके ठीक है सो यहाँ पे हम ये देखिए डेटा माइनिंग बहुत सारा पैटर्न दिया आपको जो कि मेरे डेटाबेस में नहीं आता पर मुझे सारे में इंटरेस्ट नहीं था यूजर के कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं यूजर के कुछ कंडीशंस हैं जो पैटर्न कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं वही पैटर्न आगे जाएंगे बाकी सारे डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे एंड नाउ द लास्ट है अब यूजर को जो चाहिए वो पैटर्न तो मैंने निकाल लिया यूजर को जो चाहिए वो पैटर्न मैंने निकाल लिया मंथली सेल ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया बट ये मैं यूजर को बताऊं कैसे यूजिंग सम विजुअलाइजेशन हर्ष मैंने सी मैंने क्या कहा ऐसा नहीं है आपके जो डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स हैं हो सकता है वो बहुत सारे जनरेट करेंगे ऑब्वियसली डिपेंड ऑन एसोसिएशन रूल जो कि आप पढ़ेंगे आप बहुत सारे एसोसिएशन रूल्स देंगे उसके हिसाब से वो पैटर्न आपको देगा बहुत सारे ऐसा होता है उस पैटर्न से भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ऐसे केस में हम बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा मुझे आगे जाना है तो मेरे पास कुछ इवैल्यूएशन टूल्स रहेंगे जो इसमें मदद करें अब जैसे मैंने कहा आपको जो चाहिए वो पैटर्न इवैल्यूएट हो गया अब वो पैटर्न जैसे मंथली सेल्स था मंथली सेल्स मालूम पड़ गया है अब यूजर को मंथली सेल हम डिस्प्ले कैसे करेंगे हो सकता है ग्राफ फॉर्म में करें हो सकता है पाई चार्ट फॉर्म में करें स्कैटर प्लॉट बॉक्स प्लॉट टेबल ट्री ऐसे अलग अलग बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वो डेटा यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं तो क्या कहते हैं सेलेक्टेड इंटरेस्टिंग पैटर्न ये जो पैटर्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं दे रिप्रेजेंट नॉलेज डेटा से आपने नॉलेज निकाल लिया व्हाट इज द मंथली सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट द मंथली सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉलेज तो यहां पे इन दिस स्टेप expected knowledge is given to the user in forms such as graph, pie chart, scatter plot, table tree, etc. So these are your KDB steps. आपके पास डेटा है डेटा में से नॉलेज चाहिए सबसे पहले प्रीप्रोसेसिंग करना पड़ेगा बहुत बड़ा डेटा है डेटा हाउस में सबसे पहले एस्पेक्ट वेरीफाई करके आपको जो डेटा चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए वो डेटा में बहुत सारे नॉइसेस होंगे नल वैल्यूज मिसिंग वैल्यू इनकरेक्ट वैल्यूज उन डेटा को क्लीन कर लीजिए डेटा को उस डेटा में अलग अलग सोर्सेस से डेटा आ रहा है तो अलग अलग सोर्सेस से जो भी डेटा आ रहा है उनके इंटरनल फॉर्मेट्स अलग होंगे तो सबसे पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपका डेटा कॉमन फॉर्मेट में आ जाए अब जो भी डेटा आ गया है उसको उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कीजिएगा जो डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को सूट करता है डेटा माइनिंग यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स करेंगे जो मुझे उस डेटा में से बहुत सारे हिडन पैटर्न्स जनरेट करेंगे आप बहुत सारे पैटर्न जनरेट हुए जरूरी नहीं सारे पैटर्न हमारे काम के हो कुछ पैटर्न हमारे काम के होंगे यूजफुल पैटर्न इंटरेस्टिंग पैटर्न बहुत सारे पैटर्न हमारे काम के नहीं होंगे ना अब एक बार बहुत सारे पैटर्न जनरेट हो गए जो पैटर्न काम के हैं और जो नहीं है वो पता करके हम पैटर्न इवैल्यूएट करेंगे मुझे मेरे इंटरेस्टिंग पैटर्न पता चल गए हैं अब वो जो रिजल्ट है मेरा उसको मैं यूजर को किस फॉर्म में डिस्प्ले करूंगा वो मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू करूंगा सो दिस इज योर एडीडी स्टेप्स प्री प्रोसेसिंग डेटा माइनिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ना ये देखते हुए मुझे क्वेश्चन ये पूछना है अगर मैंने आपको कहा कंपेयर एडीडी एंड डेटा माइनिंग क्या एडीडी और डेटा माइनिंग सेम है क्या एडीडी और डेटा माइनिंग सेम है बोलो हेलो इस एडीडी डेटा माइनिंग सेम ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे डेटा माइनिंग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एडीडी स्टेप्स अच्छा बेटा डेटा माइनिंग क्या होता है डेटा माइनिंग के पास जो डेटा आता है वो ऑलरेडी क्या होता है प्री प्रोसेस आता है और एडीडी के स्टेप्स ये इंश्योर करते हैं कि वो डेटा प्री प्रोसेस हो तो सेकंड पॉइंट क्या है डेटा माइनिंग अज्यूम्स डेटा इज प्री प्रोसेस्ड एंड टू इंश्योर डेटा इज प्री प्रोसेस्ड to ensure data is pre-processed when given to is the job of AD process. Now, these are data mining से data mining pattern present करता है ठीक है उस वो नॉलेज नहीं डेटा माइनिंग जो डेटा वो बहुत सारे पैटर्न है उसके अंदर से हमको जो चाहिए वो हम इवैल्यूएट करते हैं और फिर एडीडी इंश्योर करता है कि वो इवैल्यूएट किया है तो डीएम डेटा माइनिंग ओनली जनरेट्स लॉट ऑफ हिडन पैटर्न्स दिस जॉब ऑफ मैंने एडीडी प्रोसेस किया बेटा वो पैटर्न इवैल्यूएशन एंड विजुअलाइजेशन स्टेप है ये एडीडी प्रोसेस है इट इज द जॉब ऑफ एडीडी प्रोसेस टू इवैल्यूएट द पैटर्न्स identify useful pattern and present the knowledge to user using tools. तो ये when you also compare KDB and data mining. Now, specifically कहा कि भाई why do we need data mining? Question. Why do we need data mining? मैंने कहा कि अगर मुझे to get information that are visible in database, we can use SQL query. Example जो मैंने आपको दिया था ID, name, age, product type. पहला, to find all customers with age greater than 40. Second, to find customers with specific product type. Example, LCD. ये क्वेश्चन क्या ये सब बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा में ऑलरेडी विजिबल होंगे कस्टमर आईडी C1 नेम अजय एज 45 LCD में ये जो डेटा है ये डेटा मेरे कस्टमर टेबल में रेडी विजिबल होंगे सो दीस इन्फॉर्मेशन ये नॉलेज नहीं दीस इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली रिप्लाई क्या यूज करके यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी लेकिन however अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन आंसर चाहिए टू आंसर क्वेश्चंस लाइक कौन से क्वेश्चन सर इफ कस्टमर हैज परचेज्ड एलसीडी टीवी व्हाट अदर प्रोडक्ट्स कस्टमर इज लाइकली टू परचेज अगेन क्वेश्चन पूछा सेकंड क्वेश्चन है इफ हमने एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो एज के ऊपर भी हम हिडन पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ कस्टमर इज मिडिल एज्ड देन व्हाट प्रोडक्ट ही और शी इज likely to purchase. यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चंस ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जो टेबल में मिल जाएंगे it cannot be answered by filing तो अब इसमें क्यों नहीं कर सकते बेटा हम देखिए हम SQL यूज करके वही डेटा जनरेट कर सकते हैं जो एट्रिब्यूटेड है जैसे मैं आईडी दे सकता हूं आईडी इज एन एट्रिब्यूट आईडी इज अ कॉलम नेम इज अ कॉलम एज इज अ कॉलम सो हम SQL यूज करके वही क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं जो एट्रिब्यूटेड है लेकिन मैं लाइकली टू परचेज नाउ मेरे डेटाबेस में मेरे टेबल में लाइकली टू परचेज करके एट्रिब्यूट है नहीं मेरे टेबल में लाइकली टू परचेज करके एट्रिब्यूट नहीं है सो दैट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय फाइलिंग SQL query as the table does not have likely to purchase attribute या एट्रिब्यूट नहीं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे अब आपको ऐसे केस में डेटा माइनिंग की जरूरत पड़ेगी नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके चल व्हाट इज डिफरेंस इन हाउ
data is stored in database and data warehouse. चलो, let us discuss this question. कि भाई डेटा में फर्क क्या है, जो डेटाबेस में स्टोर है, डेटा वेयरहाउस में है. बेटा इन डेटाबेस डेटा कैसे स्टोर किया गया है? One place. डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, राइट? और ये टेबल किस पे डिजाइन किया गया है? Schema. इट इज डिजाइन बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज डिजाइन बेस्ड ऑन ईआर मॉडल्स. मतलब ये हो गया डेटाबेस. इन डेटा वेयरहाउस में कैसे बेटा? यार मैंने आपसे क्यूब में कहा था, क्यूब में जो भी डेटा है वो फैक्ट है, फैक्ट. तो हमारा जो डेटा है ना बेटा, डेटा इज स्टोर्ड इन फैक्ट टेबल. मैं फैक्ट टेबल और डिस्कस करूंगा. जब मैं आपसे स्टार स्नोफिक्स स्कीमा की बात करूंगा. आज मैंने जानबूझ के स्टार स्नोफिक्स स्कीमा की बात नहीं किया है. हम वो भी बात करेंगे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्योंकि मैं डेटा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं. ठीक है? तो डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फैक्ट टेबल. यहां नॉर्मल टेबल है. यहां डेटा किस फॉर्म में स्टोर किया गया है? डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल. सर फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल का ध्यान देना. मैं कहता हूं फैक्ट टेबल. व्हाट इज फैक्ट टेबल? प्लीज समझिए. फैक्ट टेबल मतलब जो डेटा एनालाइज करना, और डायमेंशन टेबल का डेटा जिसके हिसाब से एनालाइज करना. दोनों में फर्क है. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने यहां पे बात की थी जस्ट डायमेंशन टेबल का. ठीक है? कोई एग्जांपल ले. ठीक है? यस, जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया था, मैंने आपसे क्या कहा था? द डेटा ऑफ एवरी सेल इज फैक्ट. नाउ टेल मी, ये सेल का डेटा क्या है? ये सेल का डेटा क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न. बराबर है कि नहीं? ये सेल में जो डेटा है वो क्या बता रहा था कि कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं और क्या प्रॉफिट अर्न किया है. तो द फैक्ट टेबल ओनली कंटेन टू इन्फॉर्मेशन, यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न. बट व्हेन वी वर परफॉर्मिंग दिस एनालिसिस, द एनालिसिस वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, रीजन एंड मंथ. करेक्ट? इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, रीजन एंड मंथ. प्रोडक्ट, रीजन एंड मंथ. तो ये जो प्रोडक्ट, रीजन और मंथ है, ये मेरा डायमेंशन टेबल है. ये मेरा डायमेंशन टेबल है. सो अगर आपको देखना है यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन देता हूं यहाँ पे कि ये मेरा फैक्ट. सो फैक्ट टेबल स्टोर्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट. डायमेंशन टेबल क्या स्टोर करता है? प्रोडक्ट. किसके हिसाब से एनालिसिस करना है? प्रोडक्ट, रीजन एंड मंथ. तो ये यहाँ पे डेटा अलग से स्टोर होता है. डेटाबेस में वो नॉर्मल टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है जो कि ईआर मॉडल पे बेस्ड होता है. लेकिन डेटा वेयरहाउस में डेटा फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. अच्छा, ये डेटा किसके बेसिस पे डिजाइन किया गया है? हम क्या बोलेंगे? टेबल इज डिजाइन ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेज. ओके, नाउ एक बात सोचिएगा. ओए, ये मेरा पहला पॉइंट था. ये मेरा पहला पॉइंट था. मैंने आपसे क्वेश्चन कहा है. मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाउ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस? तो सर अगर आपने डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है, पहले मैंने आपसे कहा कि डेटाबेस में है तो टेबल और ईआर मॉडल बेसिस में होगा. डेटा वेयरहाउस में फैक्ट और डायमेंशन टेबल होगा. दूसरा ये बात करेंगे, अगर मैं डेटा को डेटाबेस से सेलेक्ट करता हूं तो क्या उसको प्री प्रोसेसिंग लगेगा? If data is selected from database, then it will need pre-processing. बराबर? As the data is not clean, बराबर? ये डेटा क्लीन नहीं है. लेकिन अगर मैं डेटा को कहां से सेलेक्ट करता हूं? If data is selected from data warehouse, then it does not need pre-processing. डेटा को pre-processing लगेगा ही नहीं. As data is integrated, clean and transparent. अच्छा, तीसरा पॉइंट. ठीक है? अगर मेरे को डेटा सेलेक्ट करना है, सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना है, तो फ्रॉम डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस आल्सो टू सेलेक्ट डेटा वी मे फायर एसक्यूएल क्वेरी. बट टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज वी नीड डेटा माइनिंग टू रिलाई ऑन डेटा वेयरहाउस डेटा. ये हमारा छोटा सा कंपैरिजन था कि सर आप डेटा को जब स्टोर करते हैं डेटाबेस में और डेटा वेयरहाउस में क्या फर्क है. नाउ देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन ऐसा है कि आपने जब पढ़ लिया, then another very important question that arises is data mining system. आपके समझ में शोर आर्किटेक्चर. यहाँ से डेटा माइनिंग, यहाँ से डेटा माइनिंग की शुरुआत होती है. हमने देखा कि स्टेप्स क्या हमने आपके ये देखा कि डेटाबेस और डेटा माइनिंग में डेटा हमारा डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है, डेटा में क्या डिफरेंस है. नाउ once we understood this, now we need to study कि मेरे जो डेटा माइनिंग सिस्टम उसके आर्किटेक्चर में कैसे होगा. So let us talk about data mining system architecture. Just give me okay. Now we go ahead step by step. सबसे पहले देखिए पहले ओवरव्यू दे दो फिर आंसर करो. सबसे पहले आपके पास डेटाबेस है. सबसे पहले आपके पास डेटा किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? या तो डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर रहेगा या तो डेटा warehouse. So let me first talk about the complete architecture as a whole and then we will write the answer. So सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा डेटा. There is something called as database और data warehouse server. Database या data warehouse server में डेटा कहां से आएगा? डेटा या तो database से आएगा या तो data warehouse से आएगा. करेक्ट? तो एक्चुअली database server में क्या होता है डेटा? It actually contains actual data ready to be operated. तो एक्चुअली जो भी डेटा है डेटा माइनिंग ऑपरेशंस के लिए रेडी है वो डेटा कहां से होगा? डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर. अभी सर डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर में डेटा कहां से आ रहा है? कौन? या तो डेटाबेस से या तो डेटा वेयरहाउस से. अगर डेटा डेटाबेस से आए तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा और प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा. अगर वो डेटा डेटाबेस से आए तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे? सिलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग दोनों करना पड़ेगा. लेकिन अगर वो डेटा डेटा वेयरहाउस से आए तो कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? सिलेक्शन, क्योंकि डेटा वेयरहाउस में ऑलरेडी प्रोसेस फॉर्म में रखा गया है. ये पहले से क्लियर हो गया आपको? अच्छा ना, अब डेटाबेस सर्वर में आपका सारा डेटा है. इट कंटेन्स एक्चुअल डेटा टू बी ऑपरेटेड. डेटाबेस सर्वर किससे बात करेगा? आपने डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करना. ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा? डेटा माइनिंग इंजन में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो बेसिकली डेटा माइनिंग इंजन करेगा. डेटा माइनिंग इंजन करेगा जो भी मेरे प्री प्रोसेस डेटा है उसमें जो भी हिडन पैटर्न है उसको क्या करेगा? वो आइडेंटिफाई करेगा. ना लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है. सर ये जो डेटा जा रहा है डेटा माइनिंग इंजन में, ये जो डेटा जा रहा है डेटा माइनिंग इंजन में, ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए. सर एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि फॉर मिडिल एज कस्टमर मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैंने आपको क्या बोला है कि अगर मिडिल एज कस्टमर है तो प्रेडिक्ट करो वो क्या प्रोडक्ट परचेज करेगा. तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा? सर आप कैसे डिसाइड करोगे कि मिडिल एज कस्टमर कैसा होता है? तो हम क्या बोलेंगे नॉर्मली किसी कस्टमर का एज अगर 35 to 45 है तो हम क्या बोलेंगे ये मिडिल एज कस्टमर है.
अगर आपसे कहा, अगर आपने कहा आपको डेटा माइनिंग ऑपरेशन करना है, सब क्या ऑपरेशन करना है, अगर आपको ये पता करना है कि कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मैंने आपको क्या खरीदते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो क्वेश्चन ये राइज होता है सर आप कैसे डिसाइड करोगे कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, यानी अगर मेरे को प्रोडक्ट का मैंने ऐसा कह दिया कोई प्रोडक्ट अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब मैं हिडन पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो आपको लगता है मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय मिलेज, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेटा, कम ऑन, क्योंकि मेरे टेबल में कहीं भी लिखा नहीं होता है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्या है, मेरे टेबल में क्या लिखा है प्रोडक्ट का प्राइस, मेरे टेबल में कहीं भी लिखा नहीं रहेगा डेटाबेस में कि मिडिल एज कस्टमर क्या होता है, वहां क्या लिखा रहता है कस्टमर का एज, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज डेटा माइनिंग इंजन विल नीड सम मोर डेटा, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल मिडिल एज, एग्जांपल एक्सपेंसिव, तो अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉलेज बेस, यस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉलेज बेस, नॉलेज बेस में ठीक है, नॉलेज बेस में क्या होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज, तो नॉलेज बेस से ये बैकग्राउंड नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, नॉलेज बेस से बैकग्राउंड नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके डेटा माइनिंग इंजन को देते हैं, डेटा माइनिंग इंजन के पास डेटा तो आता है डेटा सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से, बट उस डेटा को ऑपरेट करने के लिए हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगेगा और वो हमको नॉलेज बैकग्राउंड वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है इन फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, और वो बैकग्राउंड नॉलेज को कहां से मिलता है नॉलेज बेस से, मेरे डेटा माइनिंग इंजन ने ऑपरेशंस परफॉर्म किए तो मेरा डेटा माइनिंग इंजन क्या करेगा, मेरा डेटा माइनिंग इंजन क्या जनरेट करेगा हिडन पैटर्न्स, अब ये जो हिडन पैटर्न है जो मेरे डेटा माइनिंग इंजन जनरेट किया है, शुड आई बी हैप्पी विद द पैटर्न जनरेटेड, नो शुड आई हैप्पी विद द पैटर्न जनरेटेड, नहीं क्यों मुझे सारे पैटर्न काम क्या करे, नहीं हां ऐसे चाहिए मत क्यों हमको क्या करना पड़ेगा, यस इवैल्यूएशन आगा इवैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कौन पड़ेगा, पैटर्न इवैल्यूएटर yes we have pattern evaluation engine, इसमें पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन का काम है इट विल गिव यूजफुल, ठीक है, मेरा जो डेटा माइनिंग इंजन है इट विल गिव यूजफुल और यूजलेस पैटर्न, करेक्ट, सो इट इज द जॉब ऑफ पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन टू इवैल्यूएट ऑल द पैटर्न दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटा माइनिंग इंजन, अच्छा उसके लिए यूजर कुछ थ्रेशोल्ड देगा, उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से वो क्या करेगा पैटर्न को इवैल्यूएट करेगा, नाउ एक बार अब मेरे डेटा माइनिंग पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन ने क्या कर दिया बेटा, मेरे यूजफुल पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, अब यूजफुल पैटर्न को किसको देगा बेटा विजुअलाइजर यूजर को फॉर विजुअलाइजेशन यूजिंग सम GUI टूल्स, इज दैट क्लियर, अच्छा ये जो पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन ये होगा, मेरा पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन क्या बेटा दो काम करेगा, मेरे नॉलेज बेस को बार-बार अपडेट करेगा, क्यों मेरे पास पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन ऑन सम इनपुट गिवन बाय यूजर आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें कहा मुझे मंथली सेल्स चाहिए तो थ्रेशोल्ड यूजर ने दिया मंथली 30 डेज 31 डेज, ये थ्रेशोल्ड यूजर ने दिया है, अच्छा यूजर इस थ्रेशोल्ड को चेंज नहीं कर सकता है, सो ये जो यूजर है मेरा ये सारा डेटा नॉलेज बेस में है, तो थ्रेशोल्ड बाय यूजर, तो पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन मे गेट द थ्रेशोल्ड व्हिच इज सेट बाय यूजर फ्रॉम द नॉलेज बेस, इट मे आल्सो अपडेट द थ्रेशोल्ड एंड कैन राइट द न्यू थ्रेशोल्ड इन द नॉलेज बेस, सो अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर बनता है, दिस इज योर कंप्लीट डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर, इज दिस क्लियर सर हां सर पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन थ्रेशोल्ड अपडेट क्यों कैसे करेगा, पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन थ्रेशोल्ड जैसे नॉलेज बेस को अपडेट क्यों कैसे करेगा, एक एग्जांपल अपने मंथली सेल्स चाहिए, ये पैटर्न सेल्स थ्रेशोल्ड क्वार्टरली ना, हां तो मैं यूजर का यूजर GUI के थ्रू पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन को बताएगा और वो नॉलेज बेस को अपडेट करेगा, सी यहां यूजर का तो थ्रेशोल्ड यूजर से करेगा, हाँ ऐसे नॉलेज बेस बात करेगा नहीं करेगा, एक बात बताओ मैं अगर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूं और मेरे को एनुअल बजट जो मैंने स्पेंडिंग किया है वो स्टडी करना है, मंथली स्टडी करना है, क्वार्टरली मार्केटिंग करना है, तो मेरा जो ये मैं सेट करूंगा क्या थ्रेशोल्ड चाहिए, तो मेरा डेटा माइनिंग बहुत सारा डेटा मैंने थ्रेशोल्ड से क्वार्टरली एग्जांपल, तो अब वो नॉलेज बेस एक्सट्रैक्ट क्वार्टरली चाहिए और जो बहुत सारे मैं जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे समझ आ जाएंगे, हमको समझ सारे चाहिए, हमको ये पर्टिकुलर समझ चाहिए, सो जो यूजर बताता है ना जैसे मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्वार्टरली सेल्स का समझ चाहिए, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्वार्टरली सेल्स ये थ्रेशोल्ड यूजर बता रहा है, इससे क्या होगा जो माइनिंग इंजन बहुत सारा पैटर्न जनरेट करेगा वो बहुत सारे से समझ जाएंगे, सो अगर पाली कंपनी से पता करना है पाली जी का क्वार्टरली सेल्स क्या है ये थ्रेशोल्ड है, मैं जब डेटा वेयरहाउस में खाली पाली जी का प्रोडक्ट डेटा नहीं होगा ना, डेटा वेयरहाउस में पाली जी के पाली कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट के डेटा होंगे वो सारे पैटर्न जनरेट करेगा, मेरा इवैल्यूएशन इंजन बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड गिवन बाय यूजर कि पाली जी बिस्किट क्वार्टरली वो सिर्फ मुझे उतना डेटा निकाल के यूजर को देगा, समझ आया, अच्छा तो सर जो बाकी बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी यूजर पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन के थ्रू ही नॉलेज बेस में अपडेट करेगा, नहीं सिर्फ थ्रेशोल्ड यूजर अपडेट करेगा तो नॉलेज only threshold, बैकग्राउंड नॉलेज कौन सा रहेगा, हाँ the interaction between the pattern evaluation engine and knowledge base is bidirectional, मतलब user will enter the threshold and user evaluation pattern will fetch the threshold, इस शब्द में ऐसा सवाल ये है कि बैकग्राउंड नॉलेज चेंज हो सकता है इन फॉर्म तो वो कैसे अपडेट होता है, background knowledge बैकग्राउंड नॉलेज के पैरामीटर्स ओवर टाइम चेंज हो सकते हैं हाँ तो उसे यूजर कैसे अपडेट भाई उसको यूजर नहीं करेगा, नॉलेज बेस यूजर नहीं करेगा बच्चा, नॉलेज बेस यूजर डेटा वेयरहाउस के लिए होगा ना, मतलब फैसिलिटी थ्रेशोल्ड सेट करना क्यों मैं क्या बोल रहा यूजर को फैसिलिटी अब जैसे बैंक में जाता है बैंक में लास्ट एक साल में पासबुक अपडेट कर दिया एग्जांपल, अब वो जो काउंटर पे बैठा बंदा है वो यूजर है, वो यूजर की पासबुक अपडेट करने का कोड है वो तो इन्फोसिस से सॉफ्टवेयर तो इन्फोसिस का टीम वो करना है ना, तेरा नॉलेज बेस अपडेट तेरा डेटा में डेटा वेयरहाउस उसको डेटा सर्वर डालने का काम, डेटा सर्वर से डेटा माइनिंग इंजन से हिडन पैटर्न जनरेट करने का काम, ये सब काम तेरे बैकग्राउंड टीम डेटा वेयरहाउस को मैनेज कर रही है वो कर रही है बेटा, अब डेटा वेयरहाउस टीम का काम है तो सॉफ्टवेयर बनाओ डेटा वेयरहाउस मैनेज करो और यूजर को GUI दे दो जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करेगा, अगर तुम SBI में जाते हो SBI में जो वहां पे मैनेजर है या जो रिटेल बैंकिंग में लोग बैठे हैं उनको सॉफ्टवेयर नहीं मालूम कैसे काम करता है, उनके पास GUI है जिसके थ्रू वो सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो नॉलेज बेस अपडेट करने का काम सिर्फ यूजर वही करता है जहां थ्रेशोल्ड देना बेटा, इस अंदर मेरा क्वेश्चन ये था कि नॉलेज बेस के कुछ पैरामीटर्स अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं तो वो कैसे अपडेट होते वो यूजर नहीं करेगा डेटा वेयरहाउस टीम होगी ना, हैं, मतलब टेक्निकल टीम से अलग से अपडेट करेगा, अरे बाबू ये सब नीचे ना ये सब टेक्निकल टीम है इसके नीचे, मतलब मेरा सवाल ये था कि अज्यूम करो एक तेरा सुन भाई तेरा सवाल समझा तू कह रहा है मैं तो कहना नहीं तेरा सही नॉलेज बेस अपडेट कैसे होगा, बराबर बराबर ना देखो ना इसको मैं जैसे डेटाबेस सर्वर कौन आ रहा है इसमें टेक्निकल टीम है ना ये सब करेगी, ओके सर इसके करोड़ का ना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस करोड़ रुपए के एक सिंपल ERP लेना जैसे कॉलेज को ERP लेना तो 7 करोड़ 2 करोड़ के मेंटेनेंस चार्ज है ERP के, तो डेटा समझो कैसे है हमें ये वो बनना है जिसको वो पर्टिकुलर डेटा चाहिए, मैं कंपनी का ओनर मेरे को डेटा चाहिए डेटा इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेरे को डेटा चाहिए वो मेरे को पहले से बताएंगे नीड बेस तो तुम्हारा काम है जो मेरी टेक्निकल टीम है उसके डेटा में इंजन ने वर्जन सेट किया हुआ है वो डेटा जनरेट करेगा, मेरे को यूजफुल क्या है वो मैं बताऊंगा यूजिंग थ्रेशोल्ड मैं यूजर ओके ओके सर तो अगर मैं आर्किटेक्चर को आपको एग्जांपल क्वेश्चन डेटा माइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर ये डायग्राम और लिखा हुआ क्लियर परफेक्ट और सॉल्व एग्जाम मैं इसको शॉर्टेस्ट में देता हूं, डेटा रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग आर सिलेक्टेड फ्रॉम database or data warehouse by executing queries through database or data warehouse server. अपने डेटा को एक्सपेक्ट करिए, now if data is selected from data warehouse then no pre-processing is required. The data mining engine is used to apply data mining algorithms on the selected pre-processed data. अच्छा मैं अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगेगा दी उसको इवैल्यूएट करो सीनियर सिटीजन, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि सर क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगेगा, तो अगर मेरे यूजर को पता करना है कि कितने मिडिल एज लोग ने क्या क्या खरीदा है तो सर मिडिल एज का इन्फॉर्मेशन आएगा नॉलेज बेस एक्सपेंसिव क्या है इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस में होगा, कौन सा लेंगे दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय डेटा माइनिंग इंजन्स टू परफॉर्म द गिवन डेटा माइनिंग ऑपरेशंस इज कॉल्ड
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बैकग्राउंड नॉलेज, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बैकग्राउंड नॉलेज कहते हैं। इन बैकग्राउंड नॉलेज कहाँ होता है? द नॉलेज बेस कंटेन्स बैकग्राउंड नॉलेज। ओके, पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन क्या करेगा? द पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एक्सपेक्टेड जो भी पैटर्न आएगा एंड द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड्स आर यूज्ड टू फिल्टर करेगा, दैट्स इट। थ्रेशोल्ड्स आर अवेलेबल फ्रॉम नॉलेज बेस। फिर हमारे लास्ट GUI component. The GUI components allows the user to interact with system और हम जो भी expected data को visualize करेंगे and visualize expected knowledge in proper student form. Yes, so this is a very important question. This is data mining system architecture. हम बहुत सारा और भी लिख सकते हैं, पर मैं सोचा कि किस information जो exam में as reproduce कर सकते हो। मैं इसमें example दे सकते हो कि भाई normally जो pattern evaluation इंजन और data mining इंजन है इनको normally साथ में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि it's like basically साथ में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि data mining इंजन के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो तो हमको दिखते नहीं है, हमको हमारे काम के पैटर्न यूज पैटर्न में दिखते हैं। So ideally they are together considered ना, तो एक ही मॉडल जिसके अंदर दो सब मॉडल है ना। जैसे आप और लिख सकते हैं कि जो मेरा पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन और जो नॉलेज बेस्ड कम्युनिकेशन है वो डायरेक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूं, चलिए मैं चल देता हूं। द इंटरेक्शन बिटवीन पैटर्न इवैल्यूएशन इंजन एंड नॉलेज बेस इज बाई डायरेक्शन। जैसे नेट बनाया है तो यहाँ क्या रहेगा? यूजर एग्जांपल, यूजर विल एंटर थ्रेशोल्ड एंड आल्सो इवैल्यूएशन पैटर्न विल फेच threshold from knowledge base. So this is complete answer about data mining system architecture. Easy? Easy? Yes, beta? I don't think that should be confusion, straightforward. Yes, sir. Now let us talk about data mining. Let us talk about a very important question. Data mining task या हमसे data mining operations भी कहते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बोला कि बहुत सारे ऑपरेशंस देखे थे, रोल अप, स्पैन रोटेशन, डाइसिंग, स्लाइसिंग। वैसे ही डेटा माइनिंग के हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ये जो भी डेटा माइनिंग के पास ऑपरेशंस है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये जो भी डेटा माइनिंग के पास ऑपरेशन दो कैटेगरी है, एक का नाम है डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क एंड वी हैव प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क। दो टाइप के बेसिक हमारे जो ऑपरेशंस डेटा माइनिंग के, ठीक है ना। जब हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टास्क, डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क, जैसे कि नाम इसका, ये डिस्क्राइब करेगा कि क्या करता है बेटा, ये मेरा जो भी डेटा है उसका जो मेरे डेटा का समरी है उसको डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ समरी ऑफ इट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ समरी ऑफ डेटा? बेटा ये इलैबोरेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा क्या द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा दैट वी आर प्रोसेसिंग। जो भी हम डेटा प्रोसेस करें उसको इलैबोरेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। सर प्रेडिक्टिव टास्क क्या है? यहां पे ऑपरेशन चलेंगे, प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क। ये इसका काम क्या है? इट विल परफॉर्म प्रेडिक्शन ऑन गिवन डेटा। भाई माइनिंग से क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। अगर मैं आपके बोला जिसने एचवी खरीदा है, क्या चांस है वो कौन सा दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा, तो ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जिसने एचवी खरीदा वो फ्रिज खरीदेगा, ऐसे सब जो मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, वी कॉल दिस प्रेडिक्टिव टास्क। जो मेरे डेटा ऑर्गेनाइज है उन डेटा के बारे में जो हम डिस्क्रिप्शन करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टास्क है। तो ये क्या करता है? जो मैंने डेटा दिया उस पे प्रेडिक्शन करेगा। और ये प्रेडिक्शन किस बेसिस पे होगा? प्रेडिक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न जनरेटेड। अंडरस्टूड? ये तो सब टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट, मेरे मेरे इसमें मशीन लर्निंग, आपके पास बहुत सारा लेवल डेटा है, आप उस डेटा से सीखिए और अगर कल आपसे पूछा जाए कि नए डेटा को लेकर प्रेडिक्शन कीजिएगा, सो दैट इज सेम टास्क डन हियर। सो गिवन आप एक पैटर्न समझिए, व्हेन वी आर गिवन न्यू डेटा इट विल बी एबल टू जनरेट प्रेडिक्शन। नाउ व्हेन इट कम्स टू डेटा माइनिंग ऑपरेशंस, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम दोनों ही बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कंपोनेंट या टर्मिनोलॉजी है क्लास, कांसेप्ट, डिस्क्रिप्शन। नाउ जैसे कि नाम दिया है डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्टिव टास्क में जाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव टास्क में जाएगा, इट इज डिस्क्रिप्टिव टास्क। नाउ आप समझिए सर व्हाट इज क्लास इन डेटा माइनिंग, इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। नाउ पहले समझिएगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, ऐसे सब रूल्स पाएंगे, चीज काम आएंगे। सो पहले क्या है? व्हाट इज क्लास? क्लास इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट सैटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। सर समझाइए इसका मतलब। एग्जांपल अगर मेरे पास कस्टमर टेबल है, इन कस्टमर टेबल वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ 50,000 कस्टमर। ठीक है, मेरा कस्टमर टेबल है जिसमें 50,000 कस्टमर के रिकॉर्ड है, ठीक है। एंड वी वांट टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ कस्टमर परचेजिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। देखो मेरे पास 50,000 कस्टमर है और मेरे को एनालिसिस परफॉर्म करना है उन कस्टमर के ऊपर जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब देखो लेट्स से 20,000 कस्टमर्स परचेज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, या 2,000 दो, चलो 20,000 का नंबर बड़ा लेता है। 2,000 कस्टमर्स हैं जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये जो 2,000 लोग हैं, आपको ये 2,000 लोगों में कौन कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये 2,000 वो लोग जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं। मैंने समझो कि वो कस्टमर जिनका समझो जो 50,000 के ऊपर का, जैसे Amazon एक कैटेगराइजेशन किया होगा, कैसे कितने लोग हैं जो 50,000 के ऊपर के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जैसे Ajiyo में Ajiyo लुक्स जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, अभी नोटिस करेंगे Ajiyo, यस। तो ये जो Ajiyo लुक्स है बेटा, वो ऐसे सारे, तो वहां पे जाके जो कस्टमर परचेज करते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट, सारे कस्टमर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल द कस्टमर्स ऑब्जेक्ट। इसमें से 2,000 ऐसे कस्टमर जो कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान से हियर 50,000 कस्टमर्स आर ऑब्जेक्ट एंड 2,000 कस्टमर्स आर द वन दैट सैटिस्फाइज कंडीशन। कंडीशन क्या बेटा? वो परचेज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। हमने कहा सपोज 50,000 में से 2,000 है जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये जो 2,000 है ना, तो दीस 2,000 कस्टमर्स हैज कॉमन
characteristics. We call them as class or concept. I hope everyone now clear object क्या होता है, class क्या concept क्या होता है. समझ में आएगा? तो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें 50,000 कस्टमर्स, अगर मेरे पास 50,000 कस्टमर्स के डेटा सेट बराबर है, ठीक है, और उनमें से मैंने कहा कि 2000 ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 2000 ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो 2000 क्या होंगे, वो 2000 बनेंगे क्लास. आई होप एवरीवन क्लियर अबाउट क्लास. क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि वो 2000 कस्टमर होंगे. 2000 क्लास बनेंगे, क्लास क्लास के कॉन्सेप्ट बनेंगे, और जो 50,000 ऑब्जेक्ट होंगे, क्या बनेंगे. आगे भाई क्लास कैरेक्टराइजेशन अलग होता है, क्लास कंपैरिजन अलग होता है. इस मुझे पूछा कि पूरे कस्टमर से कॉमन कैरेक्टर है वो क्लास है, कस्टमर से क्लास नहीं बेटा, ये जो 2000 कस्टमर है वो क्लास बनेगी. इसका कस्टमर से क्लास. So these two classes कस्टमर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन क्लास. So it's basically a set of objects having common characteristics. Given by this group of objects is the same that satisfies the given condition. समझ गए बेटा? अच्छा सर, आपने कहा जो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या डिस्क्राइब करेगा सर. पहले तो हमने देखा कि क्लास क्या होता है. ये जो क्लास डिस्क्रिप्शन टाइप है वो देखिए, हमने कहा क्लास कॉन्सेप्ट क्लास या कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन है, वो दो टाइप का होता है. एक है क्लास कैरेक्टराइजेशन और एक होता है क्लास कंपैरिजन. लेट्स सी व्हाट इज क्लास कैरेक्टराइजेशन. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्लास कैरेक्टराइजेशन. ठीक है, नाउ क्लास कैरेक्टराइजेशन क्या है पहले ना. सी अगर आपको ऐसा समझना है कि क्लास कैरेक्टराइजेशन और क्लास कंपैरिजन में क्या फर्क हो सकता है सर. सी अगर मैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिटेल में जाता हूं, अगर मैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिटेल में जाता हूं या उसके वैल्यूज आइडेंटिफाई करता हूं, तो क्लास कैरेक्टराइजेशन ये करता क्या है. इट इज यूज्ड टू जनरेट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और समरी ऑफ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो क्लास है उनका समरी देगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देगा या उनकी प्रॉपर्टी देगा. एग्जांपल फॉर 2000 कस्टमर्स परचेसिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वी कैन एक्सप्लोर अदर प्रॉपर्टीज. वो जो 2000 कस्टमर हम दूसरे प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि वेयर दे से वो जो 2000 कस्टमर है. लेकिन ये क्या जैसे बैंक करता है प्रीवियस कस्टमर करता है, बैंक करता है कुछ प्रीवियस कस्टमर देता है. करेक्ट, ये कस्टमर्स बहुत नहीं बढ़ा सकते हैं. अच्छा, इनका अकाउंट, इनका जो बैलेंस है वो काफी ज्यादा होता है, तो ऐसे कस्टमर को बैंक करते हैं कुछ महंगी पॉलिसीज, कुछ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑफर करते हैं. अभी जिसकी सैलरी कम है उसको कभी इन्वेस्टमेंट स्कीम या जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं उसको कभी बैंक कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑफर नहीं करते हैं. तो क्या क्लास कैरेक्टर, पहले मैं क्लास आइडेंटिफाई करूंगा. क्लास क्या है मेरे 50,000 में से 2000 कस्टमर ये क्लास है. अच्छा, ऐसे कस्टमर होंगे जिनका कस्टमर बैंक ने आइडेंटिफाई किया है, जैसे मोदी आइडेंटिफाई करते हैं हमको क्या करना है, बैंक ट्रांसफर करना है लोगों को. तो ऐसे अकाउंट जिनका बैलेंस बहुत कम है, 1000 के रहता है, तो ये क्लास होंगे. वो कुछ सेट ऑफ लोग जिनका अकाउंट बैलेंस 1000 से कम रहता है, वो एक क्लास होंगे. तो उस क्लास की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हमको निकालनी, कुछ फीचर निकालने, ये लोग कहां रहते हैं, ये लोग कौन से राज्य में जा रहे हैं, ये लोग क्या टाइप के ऑक्यूपेशन करते हैं. फाइंडिंग दी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज क्लास कैरेक्टराइजेशन. जैसे मैंने कहा कि अगर वो 2000 कस्टमर एक क्लास बनाते हैं जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, मुझे ऐसे कस्टमर्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे वो कहां रहते हैं, लोकेलिटी. दूसरा, वो क्या पेमेंट मेथड यूज करते हैं, व्हाट पेमेंट मेथड यूज, वो डेबिट क्रेडिट कैश, वो कौन से इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. अच्छा सर, ये सब एक्स्ट्रा क्लास कैरेक्टराइजेशन निकाल के फायदा है. द क्लास कैरेक्टराइजेशन कैन हेल्प टू इन बिजनेस डिसीजंस फॉर स्पेसिफिक क्लास. अब जैसे ये जो 2000 कस्टमर है कैन अनाउंस सम स्कीम्स फॉर दीस कस्टमर्स. इन्हें बिजनेस डिसीजन मेकिंग आते हैं कि अगर हमको मैंने सुना हम चाहते हैं कस्टमर खरीदे, बैंक चाहते हैं गोल्ड पेपर गोल्ड, वो सब कुछ बेचते हैं, मेल सब कुछ बेचते हैं, तो क्या करेंगे वैल्यू जो हमारे ऐसे कस्टमर जिनका बैलेंस बहुत ज्यादा है उनको क्लास बनाएंगे थ्रू डेटा में, और फिर उनको उस चीज समझते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास कैरेक्टराइजेशन. नाउ सर, क्लास कैरेक्टराइजेशन जैसे मैंने कहा कि अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास, अगर हमसे पूछे क्लास कैरेक्टराइजेशन इज फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास. एक क्लास पकड़ो, उस क्लास के बारे में सारी जानकारी निकालो, एक क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन. ये जानने लिखेगा इतना कुछ जानने. तो जैसे सर 2000 कस्टमर रहते हैं, क्या पेमेंट मेथड यूज करते हैं, उनका इनकम ग्रुप क्या है, ये सारी जानकारी हम निकालते हैं. हम इसे कहते हैं क्लास कैरेक्टराइजेशन. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लास कंपैरिजन. सर ये क्लास कंपैरिजन क्या है? क्लास कंपैरिजन क्या है? जैसे एग्जांपल सी यहां पे क्या होते हैं, हियर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वन और मोर कॉन्ट्रास्ट क्लासेस. एक इसकी क्या होता है, आपको ये पर्टिकुलर क्लास का प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हो दूसरे कॉन्ट्रास्ट क्लासेस में. सो एक चीज तो पक्का है, हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासेस. पहला, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टारगेट क्लास एंड देयर इज ऑलवेज वन टारगेट क्लास. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्ट क्लास. We can have one or more contrast class. ठीक है, example. So मैंने कहा out of 50,000 customers, okay, मेरे 50,000 कस्टमर में से 2,000 are purchasing expensive product, और remaining जो 48K है वो क्या करेगा, are purchasing inexpensive product. तो भाई यहाँ पे छोटे कितने क्लासेस हैं, टू क्लासेस. मेरी क्लास क्या है, टारगेट क्लास. ये मेरा टारगेट क्लास है. अब मेरे को क्या करना है, अब ये मेरा कॉन्ट्रास्ट क्लास है, जो टारगेट नहीं वो कॉन्ट्रास्ट या अदर क्लास. मुझे क्या करना है, सी हियर वी कैन कंपेयर. भाई अच्छा, कंपैरिजन क्या होगा, कौन कहां रहता है, क्या पेमेंट मेथड यूज करता है, क्या इनकम ग्रुप है. अगर मैं सिर्फ एक क्लास निकालता हूं, अगर मैं सिर्फ 2000 कस्टमर निकालता हूं जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वाले कस्टमर है, अगर मैं ये निकालता हूं कि कहां रहते हैं, क्या पेमेंट मेथड यूज करते हैं, कौन से इनकम ग्रुप में है, हम इसे कहते हैं क्लास कैरेक्टराइजेशन. लेकिन अब ये दो क्लास निकालता हूं, ये 2000 लोग जो है, ये 2000 लोग जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये कहां रहते हैं, क्या पेमेंट मेथड यूज करते हैं, और ये 48,000 लोग जो कि इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये कहां रहते हैं, ये क्या पेमेंट मेथड यूज करते हैं, ये कौन से इनकम ग्रुप में आते हैं. तो मैंने क्या किया बेटा, ये मेरे दो अलग क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस के मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करूंगा. ये कंपेयर करके क्या फायदा होता है, ये कंपेयर करके ये फायदा होता है कि कौन से कस्टमर को क्या प्रोडक्ट मैं प्रपोज करूंगा. एग्जांपल, टाटा के पास वेस्ट साइड भी है, टाटा के पास जूडियो भी है. अब टाटा क्या करेगा, जो कस्टमर को कैटेगराइज करेगा, जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी काफी अच्छी है उनको वेस्ट साइड के सारे प्रोडक्ट एडवाइस भेजेगा, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है उनको वो जूडियो के प्रोडक्ट के एडवाइस भेजेगा. कैन यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू? हेलो, तो इसमें ये है एक बहुत बड़ी डेटा हाउस है जहां बहुत सारे डेटा स्टोर है. टाटा को क्या करना है, अपना जो टाटा को टाटा को अलग अलग क्लास का डेटा दे दो. तो एक 2000 जो है वो क्लास है, 48,000 क्लास है. जब तक मैं इनका डेटा अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, ये क्लास कैरेक्टराइजेशन है. लेकिन जब मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करता हूं तब ये क्लास कंपैरिजन बन जाएंगे. हियर वी कैन कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासेस टू मेक बिजनेस डिसीजन. मैं इसे लिख देता हूं. सर आपने क्या किया, यहाँ पे एक टारगेट क्लास दिया कि भाई ये एक्सपेंसिव वाले को इनएक्सपेंसिव वाले से कंपेयर करना है. तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्लास भी एक है और कॉन्ट्रास्ट क्लास भी एक है. चलो ये मेरा पहला एग्जांपल. लेट्स से वन मोर एग्जांपल. सर जितने भी बच्चों के सीजीपीए कंपेयर करो फॉर सीजीपीए ऑफ स्टूडेंट्स.
अब अगर CGPA के हिसाब से मैं अलग क्लास बनाऊंगा, तो अगर CGPA ग्रेटर देन 9 है तो हम बोलेंगे एक्सीलेंट स्टूडेंट है। दिस इज देखो सारे स्टूडेंट समझो 50,000 स्टूडेंट है, ये 50,000 स्टूडेंट मेरे ऑब्जेक्ट है। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास बनाता हूं जिनका CGPA ग्रेटर देन 9 है। इस क्लास को नाम देता हूं एक्सीलेंट। CGPA 7 to 9 है, इनको मैंने इस सेट ऑफ बच्चों को नाम दिया गुड। अगर CGPA 4 to 7 है मैंने कहा एवरेज। अगर CGPA लेस देन 4 है हमने कहा पुअर। तो अगर मेरा ये टारगेट क्लास है, देयर विल बी ओनली वन टारगेट क्लास, आप किसी भी टारगेट क्लास बना सकते हो। अगर ये टारगेट क्लास है तो ये क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रास्ट क्लासेस। तो हियर वी कैन कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम ये बता सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी कितना सारे स्टूडेंट का डेटा है, कुछ 2 लाख 4 लाख स्टूडेंट का होगा। अब हमें वो सारे CGPA के हिसाब से क्या करेंगे, वो क्लास बनाएंगे। 9 CGPA वाले जितने बच्चे 7 से 9 वाले, 4 से 7 वाले, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अच्छा 9 वाले मैक्सिमम बच्चे कौन से कॉलेज से हैं, कौन से लोकेशन से हैं, नवी मुंबई से, थाना से, मुंबई से, उनका लोकेशन क्या है, उनके कॉलेज के नाम क्या है, उनका एज क्या है, उनको कितने 80s लगे थे, उनको कितने नंबर ड्रॉप लगे थे। जब हम इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करेंगे हमारे किसी एक टारगेट क्लास का अलग-अलग कॉन्ट्रास्ट क्लासेस से, हम इसको कहेंगे क्लास कंपैरिजन। तो हियर वी कंपेयर स्टूडेंट्स विद excellent CGPA with student having average, good and poor CGPA. तो बेसिकली यहाँ मैंने क्या कहा, व्हाट इज क्लास कैरेक्टराइजेशन, फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास। एक क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस क्लास कैरेक्टराइजेशन। एंड व्हाट इज क्लास कंपैरिजन, फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी क्लासेस एंड कंपेयरिंग देम। हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि क्लास कंपैरिजन में एक ही टारगेट क्लास होगा, एक ही क्लास होगा जिसको आप बाकी सारी क्लासेस से कंपेयर करेंगे। तो वो जो बाकी सारी क्लासेस हैं जिनसे आप कंपेयर करेंगे उनको कहा जाता है कॉन्ट्रास्ट क्लास, और जिसको कंपेयर करेंगे उनको कहा जाता है टारगेट क्लास। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। तो हमने कहा कि हमने सबसे पहले देखा क्लास या कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन एनालिसिस। There is something we will talk about. Now, what is association? Association. Now, ये ऐसा प्रोसेस बेटा जहां मुझे एसोसिएशन आइडेंटिफाई करना है या कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है किसके बीच में, एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, उन एट्रीब्यूट्स का जो फ्रीक्वेंटली एक साथ होते हैं इन डेटा सेट में। So what is association analysis? It is a process to identify association or correlation between attributes. Attributes are naam attribute value given the condition that attribute value condition. Let me rephrase it. Attribute value condition that frequently occurs together in the given data set. Example. समझो मेरे पास टेबल है, उसमें मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, A, attribute A, attribute का नाम attribute B, attribute C, attribute D। ऐसे मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। attribute A का वैल्यू है A1, B का वैल्यू है B1, A2, B2, A1, B1, A1, B1। ना अगर जब ये देखता हूं तो मैं एक एनालिसिस करता हूं। वो एनालिसिस क्या है, जब भी एट्रीब्यूट A में वैल्यू आता है A1, एट्रीब्यूट D में वैल्यू आता है B1। देखिए जब भी एट्रीब्यूट A में वैल्यू आता है A1, एट्रीब्यूट D में वैल्यू आता है B1, A1, B1। समझो 3 बार ऐसा हुआ। ठीक है, एक बार समझो ऐसा हुआ, यहां A1 आया, यहां B2 आया। ओके, बट फिर 4 में से 3 बार तो जब भी A में A1 था, B में B1 था। ठीक है, here we see in most cases then in attribute A there is A1, in attribute B there is B1, in most of the cases। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, एसोसिएशन एनालिसिस। दिस इज एसोसिएशन एनालिसिस। ये कहां यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, मैंने आपको कहा ना, आप Amazon पे अगर मोबाइल खरीदो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको फर्क से होता है कि जिन्होंने ये खरीदा है वो ये भी खरीदते हैं। तो द मोमेंट यू ट्राई टू परचेज अ मोबाइल दे विल स्टार्ट गिविंग यू सजेशंस, जो उनके स्क्रीन गार्ड है, जो भी उनके बैक कवर है, उसके सजेशन आने चालू हो जाएंगे। यस और नो? ये वो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने एनालिसिस किया होगा कि जब भी लोगों ने मोबाइल खरीदा है, उन्होंने क्या खरीदा है, उन्होंने बैक कवर खरीदा है। तो इस तरह से जब हम किसी प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज के बीच में एसोसिएशन देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन एनालिसिस। तो एसोसिएशन एनालिसिस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एसोसिएशन एनालिसिस हम बताओ, एसोसिएशन एनालिसिस इज represented in form of there is something called as association rule in the form, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x y। यहाँ पे x और y क्या बेटा, x और y क्या एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ x और y क्या बेटा, where मेथड कॉल के नाम है where x and y are attribute values such that x और y कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, the intersection is an answer। now x ये जो रूल है ये इंडिकेट क्या करता है, it indicates that those database tuples यानी rows, those database tuples that satisfies the attribute value condition in x, जो रो x के attribute value condition को satisfy करते हैं, ध्यान से, those rows, those database tuples जो satisfy करते हैं attribute value condition in x are likely to satisfy condition in y। now इसका मतलब मैं एग्जांपल चलो, थोड़ा इजी एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने कहा बाय, समझो कोई कस्टमर C है जिसने कंप्यूटर खरीदा, कोई कस्टमर C है is more likely to buy, ये एसोसिएशन हम इसको कैसे करेंगे, when particular customer C buys computer it is likely that customer C also buys software। now ये एक सिंपल एसोसिएशन है सर, इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। हाँ, सपोज मैंने कहा age of a particular customer C is 35 to 45 and income of particular customer C is between 50,000 to 80,000, it means that customer C is likely to buy laptop। See, what is it? If the age of customer C is between 35 to 40 and the income of the customer C is in the range 50k to 80k, then it is likely that customer C will buy laptop। ये सब क्या है, ये सब एसोसिएशन रूल्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किए होंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट किए होंगे, बाय परफॉर्मिंग एसोसिएशन एनालिसिस। ठीक है, क्या करेगा, in those database tuples that satisfy the attribute value condition in x। तो मैंने क्या कहा, अगर मैंने ऐसा कहा here a to b, अगर मैंने ऐसा कहा a to a b, इसका मतलब अगर a में a1 है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो b में भी वही पर्टिकुलर वैल्यू अपीयर करेगा। a में अगर a1 अपीयर करेगा तो b में b1 अपीयर करेगा। अभी हमने देखा, सपोज मैंने कहा a to b2, तो a to b2 दो बार आया बेटा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर a में a2 वैल्यू अपीयर हो रहा है तो b में b2 अपीयर होगा, लेकिन a में a1 अपीयर हो रहा है, b में b2 अपीयर हो रहा है, ये ज्यादा बार नहीं है। तो इवन तो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू एसोसिएशन के बाहर है, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि सर सारे वैल्यू ऐसे नहीं हो रहे हैं, हर रो में ऐसा नहीं है कि जहां a1 है वहां b1 है, जहां a2 है वहां b2 है। ओके, लेकिन मैक्सिमम रोज में ऐसा है, तो अगर मैक्सिमम रोज में ऐसा है बेटा तो हम उसको एसोसिएशन ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा लाइकली, तो द कस्टमर हु परचेसेस मोबाइल इज लाइकली टू परचेस बैक कवर, नॉट नेसेसरी कि हर कस्टमर जो मोबाइल खरीदेगा वो बैक कवर खरीदेगा, लेकिन मैंने कहा लाइकली, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बाय परफॉर्मिंग एसोसिएशन एनालिसिस। इज दैट क्लियर? नाउ लेट मी फर्दर एलैबोरेट, कंसीडर एसोसिएशन। ये मैंने एग्जांपल दिया,
association है by customer C purchases computer, then it is likely that the customer C will also purchase software. ठीक है, ये मेरा association. Now आप कैसे बोलोगे, सर कि ये जो आपने association है, इसका probability क्या है? क्या ये coincidence है क्या कि जिन्होंने कंप्यूटर खरीदा उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा? क्या ये coincidence है या आपने कोई measure किया है probability को? मुझे ये पता करना है कि ये जो मेरा association है कितना strong है कि जो कंप्यूटर खरीदेगा वो सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा. ये जो मेरा association है, जो कंप्यूटर खरीदेगा वो सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा. ये जो मेरा association कितना strong है. We want to find probability of above association. That is, we want to find some measures to determine how strong the rule is. ये मेरा association rule है. तो सर आपने ये पता करना है कि जो आपने रूल लिख दिया, if a customer purchases computer is likely to purchase software, कितना strong है? मुझे कुछ measures चाहिए जिससे मैं एनालिसिस कर सकूं. तो two measures to determine the strength of association rule. दो measures हैं. पहला है हम कहते हैं support और दूसरा हम कहते हैं confidence. ये हमारे पास दो measures हैं. सर कोई भी association rule अगर मुझे दिया जाएगा तो मुझे कैसे पता? बेटा देखा होगा डेटा जाएगा ना. मैंने भी देखा. तो सर अगर मेरे को कोई भी association rule दिया जाएगा तो उस association rule से मेरे को उसका strength समझना है. वो association कितना strong है. वो association कितना strong है. तो ये strength measure करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. ये strength measure करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक confidence, दूसरा support and confidence. Let us see support. Very interesting. Now example. अगर मैंने let us say for above association, ये जो association rule दिया है, support is 20%. Example. अगर मेरी association है, क्या association rule है? जो कंप्यूटर खरीदते हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते. ये मेरा association rule है. तो अगर मैंने कहा support इस association rule का 20% है, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that means in entire database whenever in entire database we have 20% time when a customer purchases computer and software both. मतलब सर इसका मैथमेटिकली क्या होगा? So support of rule x to y is total number of tuples. मैंने कहा entire database को डिनोमिनेटर में entire database total number of tuples. समझो मेरे पास मेरे database में 100 कस्टमर का डिटेल है. मेरे डेटाबेस में 100 कस्टमर का डिटेल है. तो 100 कस्टमर में से अगर मैंने कहा सपोर्ट इस एसोसिएशन रूल का सपोर्ट 20% ध्यान देना. अगर मैंने कहा ये जो मेरा एसोसिएशन रूल है, क्या एसोसिएशन रूल जो कंप्यूटर खरीदा है वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा, इस एसोसिएशन रूल का सपोर्ट 20% है. इसका मतलब अब जितने भी टोटल कस्टमर हैं उनमें से 20% ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर साथ में खरीदा है. सो डिनोमिनेटर में 20 टोटल नंबर ऑफ टपल्स और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टपल्स that satisfies both x and y. So in our example मेरा सपोर्ट क्या है? Support of by C computer by C software equals क्या होगा? So डिनोमिनेटर क्या होगा? मेरे को सपोर्ट चाहिए. Support of the one who, this is my association rule, the one by computer, the one by software. तो डिनोमिनेटर क्या होगा? Total number of customers. इसमें वो भी कस्टमर जो कंप्यूटर नहीं खरीदे हैं. Total number of customers. देखा बेटा? Total number of customers. न्यूमरेटर में क्या होगा? Number of customers who bought both computer and software. तो number of customers satisfy both x and y. तो यहाँ पे ये मेरा x है और ये मेरा y है. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Probability of x union y. बराबर है ना? तो support of association rule x y can be represented as probability of x union y. That is, it is the support of occurring both x and y together. It is support of occurring both x and y together. Is that clear everyone? मेरा सपोर्ट समझ में आया? तो अगर मैं कहता हूं कि एसोसिएशन रूल का सपोर्ट 20% है, इसका मतलब अगर मेरे पास टोटल 100 कस्टमर हैं, तो उनमें से 20 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में खरीदा है. अग्रीड और नॉट? बोलो. इंटरसेक्शन क्यों नहीं? यूनियन बोथ चाहिए. वो जो बात कर रहे हो वो कैसा आएगा कि टोटल जितने लोगों ने कंप्यूटर खरीदा उनमें से कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदा. इट विल ओनली इंटरसेक्शन. प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एक्स एंड वाई अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स है ना. ओके. ठीक है. तो वी विल स्टॉप द सेशन में नोट्स अपडेट करेंगे. ओके. I just upload the notes in the right. Okay. So good everyone. Take care. Thank you. Bye.
then this class characterization, और जब हम एक से ज्यादा everyone, I'm sorry, glitch got delayed. I was starting some very important thing. Can you hear me? Can you hear me now? Yes, sir. Let me share the screen. Okay, good. Let me share the screen. This was what we discussed last time. It all started with data mining tools. हमने डिस्कस किया दो टाइप के काम होंगे. चलिए डेटा डिस्क्राइब करेंगे, जिन्हें हम डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क कहते हैं. डिस्क्राइब मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में. दूसरा जो प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क. एक डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क हमने कहा, इट विल इवैल्यूएट एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. प्रेडिक्टिव डेटा जो भी पैटर्न से समझा है, वो पैटर्न के बेसिस पे प्रेडिक्शन करेगा. देन वी टॉक अबाउट क्लास. हमने कहा a group of objects satisfying certain condition. इससे पता चलता है कस्टमर में से अगर मुझे पता करना है जो कौन से कस्टमर जिन्होंने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदा. एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का हमने प्राइस लिखा. तो जितने कस्टमर ने वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर या कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट खरीदा है, हम कहेंगे बिलोंग टू क्लास. सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव टास्क. रिमेंबर, आइडेंटिफाइंग क्लास और कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन इज अ डिस्क्रिप्टिव टास्क. ठीक है. एंड देन हमने कहा कि हम क्लास के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेंगे, दो चीजें इंपॉर्टेंट, कैरेक्टराइजेशन एंड कंपैरिजन. उसमें मैंने क्या कहा कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टीज फाइंड कर रहे हैं, देन दिस क्लास कैरेक्टराइजेशन, और जब हम एक से ज्यादा क्लास की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, वन वी विल हैव अ टारगेट क्लास, अनदर वी विल हैव कॉन्ट्रास्ट. इसको हमने कहा क्लास कंपैरिजन. एंड देन वी टॉक अबाउट एसोसिएशन एनालिसिस and we discuss these things. It gives you likely. Like I have examples. If customer C buys a computer, then customer C is likely to buy software. We can make it more complicated. Second example, use convention. If age of customer C is 35 to 45 and income of customer C is in the range of 50 to 80K, then customer C is likely to purchase a laptop. And then we talk about association rule. Okay, we just started with support. So let's discuss it again. Okay, so let's start our session here. From this point, मैं कैमरा स्टॉप कर रहा हूँ. Okay, now हम यहाँ पे association का strength identify करना है. What is the strength of the association? Now to identify the strength of the association, हमारे पास दो तरीके हैं. एक तरीका क्या रहेगा? एक तरीका है support find out करना. Support find out करना. और दूसरा तरीका क्या है? Confidence. दूसरा तरीका क्या है? Confidence. तो when we support is just a second mouse is not working between. Okay, now please let's talk about support. मैंने आज consider for association. Support is 20%. Of association rule if a customer buys computer, then the customer will purchase software. Okay, ये मेरा association rule. If a customer buys computer, the customer is likely to purchase software. और मैंने कहा कि अगर association 20% है, now what do you mean association 20%? It means entire database. मतलब मेरे पास जो customer है, उनमें से 20% टाइम ऐसा होगा, 20% ऐसे customer हैं जिन्होंने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों खरीदा. अब this is how we represent. So what is support of X implies by is denominator में क्या है? Total number of couples. Total number of couples. हमारे एग्जांपल में क्या आएगा? Total number of customers. Numerator में क्या है? Number of couples that satisfies both X and Y. हमारे केस में X क्या है? If X is customer C buys computer, what is Y to? Customer C purchases software. तो हमारा number of couples that satisfies both X and Y ये क्या हो गया? Is the number of customers who buy both computer and software. Now is this clear? यहाँ का लास्ट टाइम yes or no? Come on. Hello. ये लगी बोल अच्छा नहीं इसका क्या है? Now अगर मैं आपसे कहा what you say, we say both X and Y which is not intersection formula because in union we can तो हमने क्या कहा this is probability of X union Y. Now अगर मैं आपको कहा उसको देखिए कौन सा है if we select customer randomly तो मैंने कहा okay suppose मैंने कहा if selected customer randomly then the probability that customer has bought computer and software. इसको कैसे represent करेंगे? If I randomly select a customer, then what is the probability that customer has bought computer and software both? ये represent करने के लिए use करूँगा. Come on. Yes. Go everyone. Hello. मैंने आपसे कहा कि if select a customer randomly, what is the probability that customer has bought computer and software both? Yes. Come on. It is a support. Rajni, correct? Anyone agree with this? Now, अब इसको कैसे represent करूँगा? मैं represent करूँगा support of X, Y. It is probability of X minimum. That is support of occurring both X and Y together. Probability example in terms of support, confidence, हम सब देखेंगे. जब हम confidence पढ़ेंगे आपको difference हो जाएगा. So अभी आपको support क्या है? Support करने का जैसे कहा कि हमारे केस में support यहाँ पे इस पे मैंने कहा अगर मेरा जो association rule है, if X is the number of people who purchase computer, Y is the number of people who purchase software, जैसे X ये है association rule C purchase computer, then it is likely that C purchase software. ये है. अगर इसका value 20%, इसका मतलब out of the total customers who make purchases, there are 20% customer who is likely to purchase software because they purchase computer. So support का denominator क्या है? Support का denominator total base. Support का denominator it's not only the denominator is not the number of people who purchase computer or it's not the customer who purchase computer. It is total customer base. तो मैं जो भी association rule लिख रहा हूँ उसका support उसका denominator फोकस कीजिए. उसका denominator है total number of couples in consideration. हमारे केस में consideration कौन है? Customer. तो denominator क्या होगा? Total number of customers. Now let me talk about confidence and then we will take example and compare it properly. तो customer को समझ गया support sorry. Second है confidence. What is confidence? Confidence का मतलब क्या? Okay, अगर मैं आपको लिखूं जिन्होंने कंप्यूटर खरीदा, देखिए denominator लगा जिन्होंने कंप्यूटर खरीदा उनमें से कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदा? You got it? That's my confidence. So अगर मैंने कहा example if confidence is 80%. अगर confidence 80% है इसका मतलब denominator क्या होगा मुझे? चलो मेरा confidence 80% confidence से लेके इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि जितने लोगों ने कंप्यूटर खरीदा वो आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? यस जितने लोगों ने कंप्यूटर खरीदा उनमें से 80% लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदा. दोनों में फर्क क्या है? इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ कस्टमर परचेज कंप्यूटर. दैट्स द जितने लोगों ने कंप्यूटर खरीदा. अच्छा डिनोमिनेटर क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट बोथ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर. तो जितने लोगों ने कंप्यूटर खरीदा उनमें से कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदा? डिनोमिनेटर नंबर ऑफ कस्टमर परचेज कंप्यूटर एंड डिनोमिनेटर भी परचेज सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली परचेज कंप्यूटर. सो दीस आर द पीपल हु परचेज बोथ. सो अगर आप एक हिसाब से देखें तो डिनोमिनेटर सही लग रहा है आपको? यस और नो? हेलो हेलो okay. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ my association rule X to Y. Confidence of the association rule X to Y is not really it is the number of couples that satisfies what? Number of couples that satisfies purchase computer, that is X. और क्या होगा? Number of couples that satisfies both क्या? Both X and Y. Any confusion? Any confusion का? You want to write this? You want to write this?
ओके प्लीज प्लीज एक बार आज हम दिखाएंगे क्या करना है प्लीज नोट फटाफट करो ठीक है वहां सपोर्ट करने वाले कस्टमर कॉन्फ्रेंस का नंबर ऑफ कस्टमर एक्स यानी हमारा कस्टमर सपोर्ट कर हमारा डिनोमिनेटर टोटल कस्टमर बेस नहीं है वो सेट ऑफ पीपल है जो नंबर रहेगा या उतने कस्टमर को करते हैं प्लीज टेस्ट टेस्ट करो इसको ऐसे करते and we calculate this p of y. How do you do this? You denominator x satisfy x, so it is the probability of y given that x happened. It is probability of y given that x happened. क्या इसको क्या कहेंगे? It is example of probability, conditional probability. It is any probability that has precondition. Please note this one. Scroll down. Okay, okay. ये ठीक है. Okay, okay. And where? Okay, चलो. ये क्या होगा? Yes. चलो. आगे में any association rule. Okay, now suppose in any association rule. अगर मैंने कहा confidence is greater than support. इसका मतलब क्या है? If I write for any association rule, confidence is greater than support. What do you understand by that? फिर numerator दोनों चाहिए? See, no. Numerator same in both. तो मैं क्या करूँगा? अगर confidence बड़ा है support से, numerator दोनों का same है, तो इसका मतलब denominator of support क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Is greater than denominator of confidence. What is denominator of support? Total number of pupils. And what is denominator of confidence? Number of pupils. That's it. That's it. Clear सब क्या क्या? सबको clear क्या करनी है? तो if for association rule, अगर इसका confidence is greater than support, हमें पता है कि numerator दोनों से है, इसका मतलब denominator of support भी greater than denominator of confidence. क्योंकि condition 2 का कोई confidence greater than support. इसका total number of samples will definitely greater than total number of satisfy x. Now also अगर मैं कहा if I say कि confidence is 100%, अगर मैंने कहा confidence is 100%, इसका मतलब means anyone who purchases computer will purchase software. Clear है? Anyone who purchases computer definitely purchase software. ये का confidence क्या है? 100%. तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत important terminology in any association rule where confidence is 100%. ऐसे association rule हम क्या कहते हैं? In any association rule when confidence is 100%, it is known as exact rule. यानी ये पक्का होगा ही होगा. अगर मेरा association है x to y, where x is number of customer who purchases computer, y is number of customer who purchases software, and if I say the confidence of x to y, if I say the confidence of x to y is 100%, इसका मतलब x to y होगा ही होगा. अगर ऐसा है तो ऐसे association rule को हम exact rule कहते हैं. What is exact rule? That's the terminology. Please note it down. Please note it down. चलो. यहाँ से कहाँ? Please note it down. Just let me know what's wrong. All good. Yes, तो exact rule है. अगर मेरा confidence 100% है, ऐसे association rule को हम exact rule कहेंगे. ठीक है ना? चलो. Can you go ahead now? चलो. Okay, let me ask you a question. Note. अगर मैंने आपसे कहा for an association rule x to y, if support is 0.2% and confidence is 98%. So comment also true. Please, I want you to comment on it. comment also true बेटा. अगर कोई association rule है जिसका support 0.2% है, लेकिन confidence 90%, 98% है. See, confidence 98% का क्या होता है? आपके सोच बताओ. Confidence 98% का क्या होता है? What do you understand by this? The confidence is 98%. Simply association rule. association rule है ना? If the customer purchases computer, then it will purchase software. अगर मैं इसी association rule की बात करूँ, तो तुमको क्या लगता है? रजनी भी 98 people purchases बोल रहा हूँ नहीं? हाँ, you mean to say कि अगर 100 लोगों ने कंप्यूटर खरीदा है, उसमें से 98 लोगों ने if 100 out of you will divide this like this. मुझे कमेंट लिखना था. Out of 100 customer who purchases computer, 98 purchases software. Okay. और ये पॉइंट का क्या मतलब है? ये पॉइंट का क्या मतलब? चलो बताओ. ये पॉइंट का क्या मतलब? Out of total 100 customer, only how will it out of total 100 customer, only 2 customers purchase both. ठीक है? अभी अब मुझे ये बताइएगा कि इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? What do you conclude by this? See, एक चीज कंक्लूजन क्या होगा? ऊपर से कंक्लूजन क्या है? It is very confident rule. It is very confident rule. Confidence है. अगर मुझे पता चला कि बंदे ने कंप्यूटर खरीदा है, तो 98% टाइम बंदा सॉफ्टवेयर खरीदेगा. It is very confident rule. But tell me about usability. Is this rule usable or not? Is this rule useful or not? Don't tell me. Is this rule useful or not? Obviously no. क्योंकि समझ दो कस्टमर कंप्यूटर खरीदा है. अगर 2 कस्टमर कंप्यूटर खरीदे हैं, तो अगर 98% कॉन्फिडेंस है, तो वही खरीदेगा. दोनों 2 कस्टमर दोनों खरीदे हैं. और उनका कॉन्फिडेंस 98% है. इतना तो ज्यादा 3 कस्टमर कंप्यूटर खरीदे हैं. इससे ज्यादा कस्टमर खरीद नहीं रहे हैं. तो इसका मतलब एसोसिएशन रूल है. ये भले कॉन्फिडेंस लेवल हाई है. भले कॉन्फिडेंस लेवल हाई है. लेकिन क्या होगा?
Nokia नहीं customer association rule कि 100% people who okay so आपको समझने की बात if X says customer buys Nokia cell phone then likely that customer will buy Airtel plan suppose मैं association if अगर confidence 100% होगा confidence 100% मतलब अगर मैंने Nokia phone खरीदा है वो Airtel का खरीदा है confidence 100% लेकिन अगर मेरे पास अगर 100 में से 1 customer ने Nokia खरीदा तो does this confidence make any sense 100 में से 1 ने Nokia खरीदा तो मैं Airtel खरीदा पर Airtel वाले उसमें इंडस्ट्री 100 में से 1 ने Nokia खरीदा तो Airtel वाले ये सोचा अच्छा जो भी Nokia खरीदा Airtel खरीदा अरे भाई Nokia खरीदी लोग बोल तो देखो ये मतलब पॉइंट आई मीन Yes, so if your confidence is very high, but if your support is low, then this high confidence will not make any sense. Then this high confidence will not make any sense. So it is a very confident rule, but not a useful rule. As total customers में सिर्फ 2% 0.2 it's not 0.2% लोगों ने साथ में कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर खरीदा तो सिर्फ नहीं खरीद रहे हैं तो ये मेरे लिए कोई यूजफुल रूल नहीं है ये ऐसे एसोसिएशन को बनाने का कोई फायदा नहीं है तो व्हाट वी नीड हमको क्या चाहिए रूल दैट वी डिफाइन एज सफिशिएंट सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सफिशिएंट चाहिए sufficient support and sufficient confidence. Please write this. Please write this, and then we'll talk about terminology. Okay. Got it? Now, I'm going to introduce you to terminology. Let's say, मैंने threshold लिया. Let's say we define threshold for a association rule. X to Y. ठीक है. Where X क्या है? It is customer C who purchases computer, and what is Y? Y is customer C who purchases software. So ये association rule. अब इससे देखना होगा. हमको कोई threshold या कोई भी support रहेगा नहीं चलेगा. हमको कोई satisfaction threshold specify करना पड़ेगा. हमने let's say the threshold is threshold क्या है? समझो threshold है support is 10%. मतलब आपका total number of customer who come to us, there are 10% of the customer who purchases book. Now 10% is a significant number. और मैंने कहा confidence is 80%. तो अब अगर आप कहां से लिख रहे हैं सबसे मैंने threshold दिया कि मैं मेरा association rule है और मैंने कहा आपका support 10% उसका confidence 80%. Now these are the threshold of an association rule. ठीक है? Now ये मेरा threshold है. Okay? ये मेरा association rule है. Okay, let me rephrase this. हम तो तरीका लेते हैं. आप बोलते हैं association rule मेरा association rule अच्छा है या अच्छा नहीं है. आप ये कैसे डिसाइड करोगे? मैंने अपना association आप confidence कर सकते हो. मेरे को ये पता है कि ये ज्यादा बहुत अच्छी बात नहीं है. confidence 80% था लेकिन support 1% था. तो association rule यूज करने के लिए. So a student may ask a question. A student may ask a question. Sir, how do you decide whether association rule is good or not? Now, in determining term, good means strong rule. Whether my association rule is strong or not. So we need certain parameters. We need certain threshold to satisfy in order to call the association rule as a strong rule. Suppose वो threshold है support 10% और confidence 80%. इसका मतलब ये मेरा threshold है. कैसे लगा मैं पूछ रहा हूँ. How do I reach to these numbers is a separate entity. Now my point is after so many research, if you reach to a conclusion, that a good threshold for support is 10% and for confidence is 80%. This is my threshold. So now I will say if we have any association rule that satisfies both the threshold, I say both I mean to say for support and confidence, then such association rule is known as strong rule. So now if association rule X to Y has support 10% and confidence 80%, then we will say it is strong. ठीक है, what is strong rule? Conclusion हो गया Yes? चलो यहाँ से strong rule. मैं तो focus करके थ्रेशोल्ड मैंने कहा कि अगर मेरा एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड डिफाइन हो गया है और अगर मेरा association rule इन थ्रेशोल्ड्स को सैटिस्फाई करते हैं तो मैं कहूंगा कि मेरा जो association rule है वो strong rule. That's it. Yes, I'll stop. Okay, done? Okay. Okay, so now just let me know something. मैंने आपसे क्या कहा था? मेरा confidence is 90%. So basically confidence gives what? Basically confidence gives what? बताओ. Confidence ज्यादा है, इससे क्या समझ आता है? Confidence ज्यादा है, इससे क्या समझ आता है? On certainty की usability, चलो मैं आपको देता हूँ. Confidence of any rule gives certainty of usability. Certainty तो certain rule है. अगर 98% confidence है, इसका rule is very certain. I am very certain कि जो भी कंप्यूटर खरीदेगा वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा. I am very certain. So confidence of any rule gives certainty. And जैसे कि हमने already discuss किया है, support of any rule gives usability. तो ये जो important. तो मुझे confidence क्या मिलता है? हमसे support से मिलता है. And now I give you a question to attempt. Now I give you a question. ये कैसे होगा? Okay, can I give you a question now? Simple answer. Okay, so the question is this. The question is, you answer me. Strong rule. Strong rule मतलब क्या होता है? It is a rule that satisfies threshold. Yes or no? Strong rule is exact rule. Strong rule is exact rule. True or false? Well, strong rule is exact rule. True or false? What is exact rule? Okay. What is exact rule? So what is exact rule? In exact rule, confidence is 100%. Now when you have strong rule satisfies threshold for support and confidence. कितना होगा मुझे पता नहीं लगा. ठीक है? So हमने क्या बोला? It is true
ये कब होगा अगर कॉन्फिडेंस होगा if my confidence is 100%. Now ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई एसोसिएशन जिसमें सपोर्ट 20% है, कॉन्फिडेंस 90% है. Suppose मेरा थ्रेशोल्ड है, suppose okay, suppose मेरा थ्रेशोल्ड 20 है, and there is an association rule which maybe satisfies 20% support and it also satisfies 90% confidence. So if my association rule satisfies both, is it a strong rule? Yes. Is it an exact rule? Depends. If my confidence is 100%, then only it is exact, otherwise no. इसलिए कहा it is true if confidence is 100% and may not be true. ये true भी हो सकता है, true नहीं हो सकता है. ये true कब नहीं होगा? Confidence 99% भी है. Confidence 99% भी है, तो भी वो exact rule नहीं होगा. So it is true when confidence is 100% and it is not true when confidence is less than 100. So if someone asks me, कि भाई strong rule exact rule होगा, पता नहीं. Strong rule वो होता है जो threshold को, strong rule वो होता है जो threshold को satisfy करे. Threshold को satisfy करने का main जो threshold define किया गया है rules के लिए. अब confidence 80% I have 80% confidence and if it gives 90% confidence, it is greater than 80, agreed. So it is strong rule because it satisfies my requisite threshold. But even if it is 80%, it is not 100%, so it will not be an exact rule. So I hope you okay with this point. Strong rule is exact rule. It may be true, may not be true. It will be true only when the confidence is 100%. If the confidence is less than 100%, it will not be true. All good? All good? So ये पहला. दूसरा मेरा point क्या है? Exact rule is strong rule. True or false? चलो. Exact rule is a strong rule. True or false? Perfect. So it may be true. Maybe true when depends on support, na? That is if the rule satisfies support greater than threshold. ऐसा भी हो सकता है. Rule is exact rule. Exact rule मतलब एक चीज तो पक्की है कि confidence जो 100%. एक चीज पक्का है कि confidence जो 100%. अगर confidence 100% है तो exact rule है. तो strong rule डिपेंड करता है. इस पे डिपेंड करता है. अगर confidence 100% है तो दो threshold एक हमारा support का एक confidence का. इतना पक्का है. If it is exact rule, confidence का threshold में हो जाएगा. So since this exact rule, so threshold for confidence is satisfied. Obviously, we 100% होगा नहीं. But अब डिपेंड करता है कि threshold support is satisfied or not. तो true होगा if the support is greater than threshold and maybe false if support is less than threshold of support and support यहाँ greater है और यहाँ less होगा. I hope everyone is clear simple concept. Yes or no? Can we conclude something like this? Strong rule need not be exact and exact rule need not be strong. So ये बात यहाँ से fast. Just let me know when you start it up. Done? Now, what is this? What is this that we talk about? Listen here. In the last session, we started with some data mining task. The first task was class concept description. Correct? Okay? This was the first task of data mining. Okay? कि भाई आपके ऑब्जेक्ट में क्लास आइडेंटिफाई कर लो. ठीक है? That was the first task. What was the second task? Class description is descriptive task. We all have two kinds of tasks, descriptive and predictive. What was the second task? Second task was association analysis. So association analysis is descriptive or predictive? Predictive. जो मैंने mention किया है. Okay, mention किया. So association analysis is predictive task. और ये करेंगे कैसे सर? ये करने के लिए आपको दो एल्गोरिथम्स दिए गए हैं. Two algorithms for association analysis. एक है a priori algorithms, दूसरा है FP group algorithm. ये दोनों algorithms मिलते हैं. So these are the two algorithms that we can make use of. तो हमने दो task पढ़ा है. For data mining we completed two tasks. One was class object description, second was association analysis. Now third data mining task is classification. Third data mining task is classification. Now classification. What is classification? Anyone? Any idea about classification? What do you understand by classification? Come on. Anyone? What do you understand by classification? So when we data mining कहाँ जाता है? Example, अगर मैंने कहा loan department है. Loan department है बैंक और बैंक loan department को हम कुछ डिटेल्स देते हैं. Given customers हम तो डेटा देते हैं. हम कस्टमर का मंथली इनकम देते हैं. एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बट मैं सिर्फ दो फैक्टर्स बताता हूं. और ये मैंने देखा नंबर ऑफ डिपेंडेंट कि ये बंदा एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर है जिसका 70,000 सैलरी है और नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन दैट कस्टमर और द पर्सन विद अप्लाई फॉर लोन इज 3. तो अपने पास ऑप्शन है. या तो लोन अप्रूव होगा या तो लोन रिजेक्ट होगा. तो लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा. ये को क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं. लेबल. सो देयर आर टू लेबल्स एसोसिएटेड विद इट. नाउ सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? इट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग क्लास लेबल. यस क्लास लेबल टू एन अननोन ऑब्जेक्ट. मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो मेरे को पता नहीं है. उसको मैं एक लेबल असाइन करूंगा. कस्टमर कोई भी कस्टमर ने बैंक में लोन लिया, एप्लीकेशन लिया, कोई अननोन ऑब्जेक्ट है, कोई अननोन एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को लेबल असाइन करूंगा. या तो लेबल अप्रूव होगा या तो लेबल रिजेक्ट होगा. सो किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट को मैं लेबल असाइन करता हूं. ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट को whose class label is not yet known. जिसका मेरे पास पहले से क्लास लेबल है ही नहीं. तो अब सर लोन डिपार्टमेंट की कैसे डिसाइड करेगा कि किसी बंदे का मंथली सैलरी 70,000 है और नंबर ऑफ डिपेंडेंट 3 है तो उसको लोन देना है या नहीं देना? आप कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? बोलो टेल मी. जस्ट लेट मी नो हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस डिसीजन. ऑन व्हाट बेसिस? प्लीज गिव मी अ सर्टेन टॉक. On what basis? How decision will be? If there are more dependent, then we should reject it. Right? How can you just can you just outright call it? Can you just make a statement outright? There has to be some basis for that. भाई you know when you are giving such statement there has to be basic assignment ना. आप ऐसे कैसे कह सकते हो? या आप किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हो या आप किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हो? Is that clear? May I start? Yeah, classification we will go back. Yeah, finish association. That was the second task. Classification is different. So if I ask you, how you make this decision? अगर salary 70,000 है और number of dependent 3 है तो आप approve करोगे रिजेक्ट करोगे. इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? To make decision.
इसका हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. We will look into history of such articles. तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर्टिकल्स, मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि मंथली इनकम और नंबर ऑफ डिपेंडेंट वाले जितने लोगों को हमने लोन दिया, उसमें से कितने केसेस में अच्छा रिजल्ट है, कितना नहीं है. अगर नहीं रिजल्ट है तो ऐसे केसेस हम सीखेंगे. अगर नंबर ऑफ मंथली इनकम कितना है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं, तो मैंने कहा वो सारे केसेस जिसमें मंथली इनकम 50,000 से कम है और नंबर ऑफ डिपेंडेंट 4 से ज्यादा है, वो सारे केसेस बाकी प्रॉब्लमेटिक हो गए. तो ये लर्निंग होगी हमारी कि अगर 50,000 है और नंबर ऑफ डिपेंडेंट 4 से ज्यादा है, ऐसे केसेस में रिजेक्ट कर दो. बट ये डिसीजन ऑलरेडी ले सकता है. I have to go back to the historical data and I have to see based on the two factors, that is monthly income and number of dependent, what was the status of the loan given in last 10 years, 15 years. So based on those status means based on those learning, we will now take the decision. So decision will not be taken it will be taken after a sufficient number of training that happens on the historical data based on two features. पिछले 5 साल 10 साल में इस इनकम के, इस नंबर ऑफ डिपेंडेंट के जितने भी लोन अप्रूव हुए हैं उनका क्या सीन है, या ऐसे कह सकते हैं कि इस साल का इस नंबर ऑफ डिपेंडेंट के अप्रूव कितने हुए. अभी मैं ये कहता हूं तो मैं कंक्लूजन दिखाऊंगा. बेसिकली इस सेक्शन में क्या होगा, we will look into history of such applicant and we will use the learning from the history to make predictions. Okay, ये जो learning हो रही है, समझो example, if we pay details of last 10,000 applications of last 10 years, मैं क्या करूंगा, पिछले 10 साल की 10,000 एप्लीकेशन मैं लूंगा और मैं स्टडी करूंगा कि ये जो 10,000 एप्लीकेशन है इनका क्या स्टेटस है, इनका सैलरी कितना था, इनका नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितना था और इनका स्टेटस क्या था. तो स्टेटस में या तो एक्सेप्ट आएगा या फिर रिजेक्ट आएगा, यानी कि मेरा स्टेटस ही लेवल है. तो बेस्ड ऑन द डेटा of 10,000 applications of last 10 years, I will be able to reach a conclusion. तो ये जो मेरे लास्ट 10 साल के 10,000 एप्लीकेशन है जिसमें स्टडी कर रहा हूं, इनको हम क्या कहते हैं? This historical data used to learn the pattern are called what? Are called training set. इसको ट्रेनिंग सेट कहते हैं क्योंकि यहाँ से हम सीखेंगे. अच्छा, एक बार ट्रेनिंग सेट में जो मेरे प्री लेवल है, मतलब मेरे ट्रेनिंग सेट में दिया आएगा कि 80,000 जिसकी सैलरी थी, 3 नंबर ऑफ डिपेंडेंट थे उनका एक्सेप्ट हो गया, 80,000 सैलरी थी, 4 नंबर ऑफ डिपेंडेंट रिजेक्ट हो गया. कैन अंडरस्टैंड? तो गिवन द सैलरी, गिवन द नंबर ऑफ डिपेंडेंट, द स्टेटस इज आल्सो गिवन फॉर लास्ट 10,000 एप्लीकेशन ऑफ लास्ट 10 ईयर. ये जो डाटा ट्रेनिंग सेट डेटा है. तो ट्रेनिंग सेट जो डेटा, ट्रेनिंग सेट हैज प्रीडिफाइंड लेवल अवेलेबल. Now, एक बार मेरे मॉडल तो एक प्रॉब्लम आ गया कि मेरी सैलरी है, ये डिपेंडेंट है, ये स्टेटस है. वी कॉल इट मॉडल और प्रोपोजिंग हाइपोथेसिस. एक बार मॉडल बन गया, हाइपोथेसिस प्रपोज हो गया, मेरा ट्रेनिंग हो गया है. वंस मॉडल इज ट्रेन्ड, then we can test the model for prediction. Even classification is predictive task. It is predictive. आपको आगे से सब्जेक्ट नहीं है और जितने भी ये जो लर्निंग हमारा ट्रेनिंग सेट अवेलेबल है पहले से ही, इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं. सुपरवाइज्ड लर्निंग क्यों सुपरवाइज्ड लर्निंग? क्योंकि गिवन द सैलरी, गिवन नंबर ऑफ डिपेंडेंट, क्या स्टेटस आपको पता है. ये जो लर्निंग है, इस लर्निंग के टाइम मेरा जो कंक्लूजन है, मेरा जो लेवल है वो मुझे पता है. ठीक है, वी कॉल इट एज सुपरवाइज्ड लर्निंग. दैट इज लेवल इज नोन. एक बचपन से फोटो दिखाया है, आपका फोटो ये है, तो ऑरेंज का फोटो ये है, लोटस का फोटो ये है, रोज का फोटो ये है, हमको पता है. हमको फोटो दिखाते बताया मैंगो है और इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग. और बाद में उससे पूछते बताओ फोटो दिखाती क्या है. तो जब मुझे बचपन से अलग फोटो दिखाती बताया जाता है, ये लोटस है, वी कॉल इट सुपरवाइज्ड लर्निंग. उस दौरान हमारी ट्रेनिंग हुई है. और बार मुझे करता है, ये चाहिए, वो हमारी टेस्टिंग हुई है. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है जिनको लेवल अब तक मिले नहीं है और मुझे लेवल असाइन करना है. ये जो क्लासिफिकेशन है, इन आवर केस इज बाइनरी क्लासिफिकेशन. जैसे मैंने लोन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया, या तो लोन अप्रूव होगा या तो लोन रिजेक्ट होगा. तो क्लास टाइप्स में क्या आएगा, टाइप्स में क्या आएगा, या तो बाइनरी आएगा या तो मल्टी क्लास. बाइनरी ओनली टू क्लास, ओनली टू क्लास लेवल्स. ओनली टू क्लास मतलब ऐसा हो सकता है, मैंने एमआई स्कैन दिखाया, बताओ ट्यूमर है या नहीं, ट्यूमर यस और नो, मेरा कोई मेल है, मेल स्पैम है या नहीं, यस और नो. सो बाइनरी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मोर देन वन क्लास. It's based on the percentage of the student. Classify the student as distinction, first class, second class, pass class, and fail. ठीक है, मल्टी क्लास किसी स्टूडेंट का परसेंटेज दूंगा कि 5 में से किसी एक क्लास में आएगा. अभी एग्जांपल क्लासिफिकेशन हमारे पास ऐसे रूल्स दिए गए हैं. 75 का डिस्टिंक्शन है, 7 से 75 का, तो फर्स्ट क्लास है, 40 से 50 से 60 का, सेकंड क्लास है, 40 से 50 का, फर्स्ट क्लास है, 40 से कम है, फेल है. तो यहां पे कोई परसेंटेज, गिवन परसेंटेज मेजर बी क्लासिफाइड इन one of these classes. We call it multi class classification and when there is only two, we call it binary classification. So classification binary होता है a set of known objects. ये known object training set है, a set of known objects जिनको हम क्या बुलाते हैं, called training set is used. इनको यूज करके क्या करेंगे, एक prediction model क्रिएट करेंगे. तो ये prediction model, अब इस prediction model को यूज करके जो नए सैंपल्स हैं उनमें मैं prediction करूंगा. This can be used to make prediction on new sample. अच्छा, इसलिए अलग-अलग अप्रोचेस हैं. सेंस में आपको डिटेल में है. तेरा ये अप्रोचेस, एक तो डिसीजन ट्री मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उसको बीइंग इंडेक्स बोलते हैं. डिसीजन ट्री जहां डिसीजन एल्गोरिथम भी यूज करेंगे. ये दो चीजें हम देखेंगे. तो क्लासिफिकेशन यूज करके डिसीजन ट्री एंड डिसीजन एल्गोरिथम. जस्ट टू गिव एग्जांपल, let me show you something. ये डिसीजन ट्री क्या है? या okay, can you see this now? We have just solved this. Listen, can you see this? We have certain cases. There are three factors: whether parent and money. If whether sunny parent is yes, money is rich, then the decision will be proportional. If whether sunny parent is no, money is rich, then we will take tennis. This is the decision because it is given. So मेरे पास ऐसे 10 वीक के डेटा सेट है. अलग-अलग वैल्यूज हैं. वेदर के कितने वैल्यूज पॉसिबल है? सनी, विंडी, रेनी. पैरेंट के कितने वैल्यू पॉसिबल है? पैरेंट या तो है घर पे या तो नहीं. और मनी के कितने वैल्यू पॉसिबल है? या तो बंदा रिच है या तो पुअर. तो ये फैक्टर्स है, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं. और मेरा डिसीजन, मेरा रिजल्ट क्या होगा पॉसिबल? मेरा रिजल्ट होगा या तो सिनेमा होगा, या तो टेनिस होगा, या तो स्टेइंग होगा, या तो शॉपिंग होगा. तो ये बाइनरी मल्टी क्लास बेटा. ये बाइनरी मल्टी क्लास कौन टेल मी? कौन टेल मी बाइनरी मल्टी क्लास? लेट्स बोलिए. अब now this is again ये जो भी दिया है सॉल्व करेगा, इसको मैं फॉर्मूला इससे मॉडल बनाऊंगा. क्या क्या सॉल्व करेंगे? ये मैं मॉडल का डिसीजन लेगा, ये डिसीजन. नाउ दिस इज डिसीजन. सबसे पहले चेक करो पैरेंट है कि नहीं. अगर पैरेंट है तो दूसरा फैक्टर चेक करने की जरूरत नहीं है, पर्सन भी बोलो ना. अगर पैरेंट है तो वेदर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर पैरेंट नहीं है तो वेदर चेक करो. अगर वेदर सनी है दे विल गो टू टेनिस. अगर वेदर रेनी है दे विल स्टेइंग. अगर वेदर विंडी है देन मनी इज द फैक्टर. वेदर इज विंडी, पैरेंट इज नॉट देयर एंड यू आर रिच, यू विल गो टू शॉपिंग, गो फॉर शॉपिंग. पैरेंट नॉट देयर, वेदर इज विंडी एंड यू आर टू गो टू. So this is decision tree. So once decision tree is calculated, you can give me any test case and I can give you the result. समझा कि नहीं समझा? हेलो, you got this बेटा? ओके, तो ये एग्जांपल है क्लासिफिकेशन. ठीक है. Just be very so it is examples. It is a class of data meaning classification. मैंने कहा ये binary हो सकता है, multi class classification भी हो सकता है. इसमें class चलो मैं आपको परसेंटेज दूंगा तो आप इसी क्लास यूज कर सकेंगे. classification. Please notice everyone fast. Okay, बेटा. Solve करो.
Audio data. Hello, hold on. Just finish it. All good? Out of chat. It's like the Right, clear. Hold on. I clear. Thanks, me. Are you going to now? Hold on. Let me just finish. Can you hear us? Yes? Now, suppose, let's start the session. Now, this was the third application was the third task. Fourth data mining task. The fourth data mining task is, okay. Now, suppose, consider. Suppose मैंने आपका question है, if salary is 70,000 and number of dependent is 3. So asking the question whether we can give loan or not, approval or rejection, that will be the problem for classification. But if I am asking you a question like this, कि आप ये बताओ कि लोन अप्रूव होगा, आप बताओ लोन कितना दे सकते हैं, loan amount. So here I am asking a number, amount of loan that can be sanctioned. So now I'm not asking you to be proof of the answer. I'm not asking you to be result as accepted or rejected. Now my question is, given this data, salary is 70, number of dependent is 3, tell me what is the maximum loan amount that can be sanctioned. Okay, this is one question. Now, obviously, how do you study this? You will look at the historical data. Again, look into historical data of last 5 years, 7 years, of last decade, and check for given salary and number of dependent. What was amount sanctioned? The amount sanctioned was already there in historical data. So again, tell me, if in historical data, for last 10 years, 15 years, whatever, but given salary and given number of dependent, the amount sanctioned is also given. So it is labeled or not? We call it labeled data. Using this data, we will create a model. Now using the model, we will predict the loan amount to be sanctioned. Now this is one example. Suppose, number of different, ये जो loan amount है, it is dependent on independent feature, it is dependent feature. So loan amount is dependent on 2 features. We call them as independent feature. So the amount of loan sanctioned depends on salary and number of dependent. So these 2 features, salary and number of dependent, we call it as independent features, and the feature loan amount is dependent feature. Now suppose also, if I give you a data set, here, where I say area in square meter of house and price of the house. So if area is 500 square meter, the price is 1.5 crore. If it is 1,000, then price is 2.3 crore. If it is 1,200, price is 2.5 crore. So what I have, now the price is dependent or independent? Like this, area in square meter is independent. So given for these values, they may ask you using these labeled data, what labeled data, for the given area, the price is given, for the given area, the price is given, for the given area, the price is given, and tomorrow ask me if the area is 875 square meter, the price. So again, it's predictive task. Here the prediction is not class. Here the concept of is not class. Here the concept of are numeric values. If this is the salary, this is the number of dependent, what is the amount is the numeric value, continuous value. If this is the area, what is the price? The expectation is price, numeric value, continuous value. Now here we have one independent feature. Right? One independent feature. Now here we have 2 independent feature. Okay? Yes or no? So loan amount was not only dependent on salary, it was also dependent on number of dependent. So there are 2 independent features. Now obviously you may ask, sir, ये price और ये बराबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे dependent करता है, कि बिल्डिंग कितना बनाना है, कंस्ट्रक्शन है, 500 square meter in Dadar and 500 square meter in Kalyan, the cost will be different. So this is not a very good model. I agree. But suppose I am having this kind of model, because model है, यहाँ area or price है. ठीक है, यहाँ पे prediction है, it is not class. Here the prediction is a continuous value. So इसको हम कहते हैं the fourth task is not classification. It is what we call as regression. तो क्या बोलेंगे? It is similar to classification. Obviously it is predictive task. It is similar to classification, but used for prediction of numerical or continuous value. Obviously मैं इसमें क्या यूज करूंगा? मैं historical data यूज करूंगा. ये historical data क्या होगा मेरा? इसको क्या लेंगे? Training set will be used. But random prediction based on historical data, based on training set data, I've already learned. Training set will be used to build regression model to predict. ठीक है? Now ये regression का दो टाइप है. पहला दो टाइप है. एक है simple regression. Now what is simple regression? If we have one independent feature and we have one dependent feature, then it's simple regression. Example, if the price of the house only depends on area, if the price of the house only depends on area, it's simple regression. However, if we have something like this, area, location, number of bedrooms, and then price. So here the price depends on 3 features. So here we have 3, 5. Here we have 3 independent features. And we have 1 dependent feature. So we call this multiple regression. So if my resultant value depends on more than 1 feature, multiple regression. So simple regression means single independent. And there are many more types of regression. Right now we focus on these 2. Multiple regression is more than 1 independent. Sorry. Am I clear? Classification answer. Classification is what is. Okay. There is a question you want. Next Tuesday, we will have all of you. Okay? Because of very early. So can we keep lecture in the morning? Everyone? Can we keep lecture in the morning now? Please, everyone. Okay. Please, everyone, kindly answer. Is it okay if lecture not? So which are the today? 11 is also okay. 9 is also okay, right? 9 to 20. Let's keep it 10. Yes, you can sleep right also. And you can okay. 10 to 12 is okay. So that 12 o'clock, you will be free. I can extend it. How is it long? We keep on lecture 10. Is that clear, everyone? Next week lecture morning 10 a.m. Okay. So remember, in classification, the output is discrete. Again, true, false, rich, poor, yes, no. What is regression? Output is continuous value. What is the price of the house? So that's the 4th data mining task that we can perform. Regression. Please write.
Can you this? Autonomous है, but वो बहुत ही है. उसी टाइम होगा बेटा, उस दिन कोई एग्जाम होगा, गवर्नमेंट का होगा. ऐसे कैसे? अभी आपको चलो आपको कैलेंडर में नहीं क्लियर होगा, मैं ऐसे बता रहा हूं. ठीक है, तो कैन यू चलो नंबर 6 क्लास. ना अभी हमने जो भी एग्जाम्पल देखा, प्लीज बेटा, अभी हमने जो भी एग्जाम्पल देखा, और क्या बोल इसका पहले एग्जाम्पल में आपके पास एक डेटा सेट था जहां पे हमको सैलरी दिया था, नंबर ऑफ डिपेंडेंट दिया था, और हमारे पास एक हिस्टोरिकल डेटा सेट था जहां पे हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा सेट था जहां पे हमको बताया गया था कि कितनी सैलरी में नंबर ऑफ डिपेंडेंट का लोन एप्लीकेशन कैसे किया. ये डेटा था, लेबर डेटा. दूसरे एजुकेशन में सब डेटा देखा था कि अगर एरिया का एरिया और क्या प्राइस होगा. सर डेटा देखा था अगर एरिया ये होगा, नंबर ऑफ बेडरूम ये होंगे, लोकेलिटी ये होगी, तो क्या प्राइस होगा. तो डेटा देखा था लेबर. तो इन क्लासिफिकेशन एंड एक मैप अभी थोड़ा सा समझने की हमने देखा. नो इन क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन मेरा जो डेटा था, डेटा इज लेबर था, और मेरा क्लासिफिकेशन में क्या था, आउटपुट इज स्ट्रेट. ठीक है, और रिग्रेशन का आउटपुट इज कंटीन्यूअस. वैसे इधर ठीक है. क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट है, रिग्रेशन में कंटीन्यूअस. डेटा से रिलेटेड मेरे पास पहले से इंस्टेंस है जिसमें बताया गया कि भाई ट्रू होगा कि फॉल्स होगा. मुझे बताया गया कि भाई अगर ये होगा तो ये प्राइस होगा. नाउ दिस इज फिट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंसीडर तो तुम पहली बार जब तुम पहली बार रिजल्ट तुमने एग्जाम किया और तुमने पहली बार अकाउंट साइन इन किया है, तुमने पहली बार अकाउंट में साइन इन किया है. हम जब भी आज के डेट में रिजल्ट ओपन करते हैं तो एमेज़न कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है. ये किस प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है मुझे? मेरे अर्लियर परचेज पैटर्न के हिसाब से प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है कि नहीं? हां या ना? मेरे अर्लियर परचेज पैटर्न के हिसाब से देगा कि नहीं? तो मेरा पॉइंट ये है कि आज जब रिजल्ट ओपन करता है तो मेरे को पहली बार देखो आज आप डिस्काउंट आज डॉक्टर आपको साइलेंस अकाउंट है तो नेटफ्लिक्स आपको क्या रखेंगे? जब यूट्यूब में पहली बार ऐड डाउनलोड करता हूं, आज मैं यूट्यूब पे बताओगे तो मेरे पिछले वॉच हिस्ट्री के हिसाब से मुझे वीडियो दिखाता है. मैं बहुत सारी न्यूज़ सुनता हूं, इसलिए अभी जब मैं आपको कंट्रोल करूंगा बहुत सारी न्यूज़ वीडियो लाएंगे. अगर तेरे को समझ तो ये लंबी हो गई है. आपके पिछले काफी सारे सर्च पैटर्न के हिसाब से मेरे वर्तमान लर्न कर लिया कि उनको क्या वीडियो है. तुम्हारे पिछले प्रोडक्ट परचेज पैटर्न के हिसाब से अमेज़न ने लर्न कर लिया कि उनको क्या प्रोडक्ट है. बट हम पहली बार इस प्रॉब्लम को कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम. व्हाट इज कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब सपोज एक एग्जांपल बताता हूं. मेरे पास मैंने आपको 5 लाइन दे दी है, मैंने आपको 5 लाइन दे दी है और मैंने आपको ओके मैंने आपको 5 लाइन दे दी है. ठीक है, मैंने आपको बताया ये क्या है. इसको मैंने नॉट लेबर. मैंने आपको 5 लाइन दे दी है, मैंने आपको बताया कि कौन सा इंग्लिश रिप्रेजेंट करता है. और थोड़ी देर बाद मेरे अलगोरिथम ने क्या किया, ऐसे ग्रुप बना लिया. अब मैं आपको दिखाता हूं. इस 5 लाइन में से एक वाला इंग्लिश फ्लावर्स के हैं. ये मैं आपको बता रहा हूं जो नहीं है. पर ये एक वाला इंग्लिश फ्लावर के हैं, एक वाला इंग्लिश कार के हैं, एक वाला इंग्लिश रिवर्स, एक वाला इंग्लिश या कार फ्रूट्स के हैं. ठीक है, 10 बार पढ़ो. एंड वन थाउजेंड ऑफ बिल्डिंग्स. Now this is not known. ये मैंने बताया नहीं है. ये फ्लावर है. मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास 5 लाख इंग्लिश है. जिससे एक फ्लावर एक फ्रूट कर बट मैंने इंग्लिश को लेकर नहीं किया. मैंने मेरे मॉडल को बताया कि ये कौन सा फ्लावर कौन सा इंग्लिश है. अब मेरा मॉडल का काम करेगा, मेरा मॉडल क्या करेगा, हर इंग्लिश का दूसरे इंग्लिश से डिस्टेंस लगाएगा. डिस्टेंस मतलब सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. तो आपको पता है कि बेस्ड ऑन द लर्निंग वी क्रिएट 5 क्लस्टर. वो क्लस्टर को नाम नहीं देगा. समझो C1 C2 C3 C4 C5. इट विल क्रिएट 5 क्लस्टर. दिस क्लस्टर will have all the flowers, this cluster will have all the fruits, this cluster will have all the cars, this cluster will have all the buildings and so on. Every one of them this is okay, this thousand will be okay, equal units. And this will be cluster will have all the equal units. But what are we actually doing is all the data. If it is flower unit and when I find the similarity between all the images of a flower, they will be very near to each other. Yes, I'm not expecting to compare similarity car, fruit, building, keyboard. So point is all the images within this cluster they will be near to each other. The distance the distance between the intra clusters will be minimum. दूसरे से और दूर अगर ये स्कार है और अगर ये फ्लावर है मतलब एक दूसरे से और होने चाहिए. सारे कार के इमेजेस एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए. We call it as intra cluster distance. So distance between the data point within the cluster and this distance inter cluster. So basically this is an example of clustering. And one more thing, this classification and regulation are example of supervised learning. Why supervised learning? Because data is labeled. Clustering is an example of unsupervised learning. Yes, because data मेरे को 5 लाइन में कौन क्या करता है ये मुझे पता ही नहीं है. ये मुझे पता ही नहीं है. इसका क्या करेंगे? It is process of grouping objects together based on similarity and dissimilarity. The main aim is to what is the main? सारे क्लास एक दूसरे को देखिए. फ्लावर बिल्डिंग बोलते हैं, फ्लावर फ्रूट्स बोलते हैं, फ्लावर कार बोलते हैं. The main aim is to minimize intra within intra cluster distance and maximize inter cluster distance. So what is distance? Distance is the measure of similarity. इसका बहुत डिटेल में बताया इसमें. So if distance is high, we will say similarity is low, and if distance is low, we will say similarity is. Here the data set is. Here the objects are. हमने कहा ये objects होते हैं. मशीन लर्निंग में और सैंपल होते हैं. Here the objects are unlabeled. मुझे पहले से पता ही नहीं है कौन क्या है. Is this clear everyone? Is this clear? Now question बहुत important है. बहुत important है. Okay. Okay. We'll stop here and next week. We have learned few of the tasks in data mining. Right? There's 3 tasks in data mining. There's 3 tasks in data mining. And one is outlier analysis. And second is what is difference? One is outlier analysis. So outlier analysis की चॉइस देते हैं. जैसे मैंने मेरे कस्टमर का एज और association analysis. Classification. Fourth was regression. Fifth, we study clustering, unlabeled, unsupervised. Sixth, we study outlier analysis. Seventh, we have analysis. Is that clear now?
Yes. Okay. Cool. I said right. It is right. Okay. So next week we are meeting 10 a.m. in the morning. Okay. All good. Okay. Good. Register CMA ना आई बाबू देखो मैं ये बताया उसका पैसा ऐसे मत रखी कोई नहीं अब जैसे मैंने बोली और स्टैंड फॉर अगर गाइड मैंने आइडिया और इसमें ये एक्सप्लोर किया 1.2 if you find the value of maps is about security clear simple it's like identity and the other one extend that why yeah it's actually listen like some points how many it's so that's actually very important because it's security let's me ये बोलना ये सवाल see there's not be सवाल there's नहीं ये बात करना है इसका मतलब आपका जो इमेजेस है वो they will have similar properties they will have very less dissimilarity the distance will be very less and hence we have grouped them into clusters eventually we will something we will depending on how we define it but when we understood this I'm trying to understand this my model will not give you something else my model will give you something else but when so model also not there it is grouped them and then we will see nothing about it मैं वो बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा हम लोग क्या करते हैं so these are all sending and then we keep on recommending us product based on all sending patterns so you must have clustered us don't I think that's my looking at my but yeah so I hope you have